Previously, we have talked about protein structure interaction, protein structure prediction, and now protein ligand interaction. So, there are two methods. One is experimental methods to interact to like protein and ligand, and the other one is computational method. So we are more interested in computational methods, but before that, let's check out like how the protein are being interacted and how we know that protein interact experimentally, like in the wet lab. So the first of the method is two hybrid screening. In two hybrid screening, two proteins are interacted, like they are made hybrid, like the proteins are divided into two parts, and if the two parts interact, and they will determine that the two proteins actually interact. Uh, Basically, going into detail, we have to know few things. First of all, also the two hybrid assay is also known as protein fragment complementation assay. Protein fragment complementation assay means the protein fragment will complement each other, means will add to the function of each other, will help to determine the function, to execute the function. A few things that are important before going into these diagrams. First is UAS. UAS means upstream activating signal. So this is UAS, and this is upstream activating signal for the reporter gene. So we will have a reporter gene, and before that we will be having an upstream activating sequence, means UAS. And after that, there is a transcription factor known as GAL4. GAL4 is a transcription factor that recognizes genes with UAS. So all genes containing this upstream activating signal, this is being recognized by a transcription factor known as GAL4, GAL4. So now in this very case, this GAL4 has been divided into two parts. Like if this is a sequence of GAL4, if this is a sequence of GAL4, so this has been divided into two parts. This is this part and this part. So this part is known to be binding domain. This is the binding domain, and the other one is the activating domain. So these two parts, so the protein has been divided into two parts, the binding domain and the activating domain. So the binding domain is being bound, this one, and the activating domain is this one. So these two domains of the same protein, the GAL4, this one. So these two domains, they constitute to make this GAL4 transcription factor. So this has been bound with one protein, the other one is bound with some other protein. Now we want to check, like this is X and this is Y. Now we want to check either this X and Y, either they interact or not. So if they gonna interact, they will make uh, BD, the binding domain, and activating domain come closer to each other due to their recognition and due to their binding with each other. So the binding domain and activating domain, they will come closer to each other to make a functional GAL4 protein. And this GAL4, already we talked about this, that this is a transcription factor. So this will do transcription for us, and transcription of this reporter gene. So if this reporter gene transcribe it do function, that will mean the X protein and the Y protein, they are actually interacting. So indirectly, we determine to know that the X and Y are interacting because the reporter gene is functional now. Am I clear? So Yes, this sir. is
this is two-hybrid assay. This is two-hybrid screening, also known as protein fragment complementation assay. Okay, and one more thing, there is also a system known as three-hybrid system. And in this three-hybrid system, only the addition is that X will bind with one domain of Z and Y will bind with the other domain of Z. In this very case, the three proteins, they will interact with each other. The activating domain and binding domain, they will constitute to form GAL4, and the GAL4 will recognize UAS and activate the transcription factor, the binding site, the activating sequence, and the reporter gene will be transcribed, and after that it will give a signal, and from that we could determine that these three proteins, they're gonna interact with each other. Okay, and okay, so let's check the other things. URA3. This URA3 is a common selectable marker. So this is a selectable marker, and this encodes orotidine 5' phosphate decarboxylase. Selectable marker, there are two markers. One is selectable, the other one is screenable. So the one in which we screen, the positive and negative are screenable marker, but selectable marker is that one that naturally it is being selected, the non-selected are being discarded, or the cell death is being occurred. So the selectable markers means the survived cells will be selected. So this URA3 is a common selectable marker, and this encodes an enzyme, and this enzyme orotidine 5' phosphate decarboxylase. This is actually required for uracil biosynthesis. So let's check. Here, UAS, the GAL4 transcription factor, if the two proteins are interacting, that will bind there, and after that, after their binding, what will happen? The transcription will occur, and that will produce URA3. Now URA3, if this enzyme is, so this will encode this enzyme. Now synthesis of this enzyme, what will it do? When this enzyme is there, and if there is another protein, the 5-fluoroorotic acid, if this chemical is there, 5-fluoroorotic acid, so URA3 will convert that into a toxic metabolite, and that will give rise to the cell death. So that means if we use this drug, we want to know either the drug is working or not. Either the like for instance, I have a protein and I want to check either this drug can interact with that protein or not. So what I will do, I can have this reverse two-hybrid system. In this case, if this drug bind to one of the protein, to the active site, the binding pocket of that protein, so now this Y will not interact with X. In this case, the URA3 will not be produced. The you can see this this symbol. This symbol means this is blocking. This is being blocked. Now, and this means this is being activated. So this has been blocked. URA3. If URA3 is not there, the enzyme is not there, it will not convert FOA into toxic metabolite, and cell death will not occur. So the cell growth will occur then. So this is how drugs are being recognized, like they are working for some protein or not. Like if these are the two proteins of a virus, and we want to check either this drug is working or not, we can go for reverse two-hybrid system for drug discovery as well. So this is what is going in the wet lab.
And this is mammalian 2-hybrid system. In mammalian 2-hybrid system, this is a prey plasmid, this is a bad plasmid, so activating domain and binding domain of the same gal4, and there is a reporter gene, UAS3, UAS reporter plasmid is there. So these three plasmid, and they are, the cells are being transfected. That will mean we will inject these three types of plasmid within the cell. They will produce the AD domain, this will produce the BD domain, this will produce the UAS, and if these two come closer to each other, they will have X and Y. And if they come closer to each other, if they bind there, they will activate UAS3 in this plasmid, and this will activate, this will encode the reporter gene, and the reporter gene will show us, like, if that is some fluorescence, the cell will fluoresce, and that's it. And next is 5-fluoroorotic acid. What is this? This is converted into toxic compound. 5 this is converted to toxic compound 5-fluorouracil by URA3 gene product. So the gene, this enzyme will convert 5-fluoroorotic acid into a toxic compound, and that is 5-fluorouracil. And 5-fluorouracil will give rise to the cell death. Am I clear? Yes, sir. Yes. Okay, who will explain? सर ये एक दो क्वेश्चन है। जी जी बताएं प्लीज। सर ये जो 2-हाइब्रिड सिस्टम है उसमें एक्स और वाई सर क्या है यहाँ पे? कोई भी लिगेंड हो सकता है जो दो प्रोटीन डोमेन्स को आपस में मिला रहा है कि एक्स एंड वाई भी प्रोटीन है। अच्छा देखें, एग्जांपल हम ले लेते हैं। लाइक मैं चाह रहा हूँ कि मेरे पास एक एंजाइम है, एंड दैट एंजाइम, लाइक कोई भी प्रोटीन है, लाइक एंजाइम छोड़ दे, कोई भी प्रोटीन है, एंड दैट प्रोटीन इज लाइक आई वांट टू नो द वायरल, लाइक वायरस का पॉलीमर, लाइक वायरस का कोर प्रोटीन है, वायरस का कोर प्रोटीन है, लाइक कोर प्रोटीन ऑफ, लाइक, या इसको इस तरह हम कह सकते हैं कि न्यूक्लियोप्रोटीन है कोरोना वायरस का। और मैं ये चाहता हूं कि ये न्यूक्लियोप्रोटीन, मैं ये कंफर्म करना चाह रहा हूं कि न्यूक्लियोप्रोटीन कोरोना वायरस का जो है, ये बॉडी में जाके वहाँ पे कोई एंजाइम है, लाइक कोई भी एंजाइम है, उसके साथ ये इंटरेक्ट कर रहा है और उसको डाउन रेगुलेट कर रहा है। ठीक है, लाइक कोई भी प्रोटीन, लाइक XYZ कोई प्रोटीन है, या ABC कोई प्रोटीन है होस्ट के अंदर, और ये उसके साथ इंटरेक्ट कर रहा है। ठीक है, सो आई वांट टू चेक आइदर, लाइक मैं कंप्यूटेशनली मैंने देख लिया है कि ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हैं, ये दो प्रोटीन, लेकिन मैंने वेट लैब के अंदर देखना है कि आइदर दे कैन इंटरेक्ट और नॉट। तो मैं क्या करूँगा, मैं ये वाला प्रोटीन लूँगा वायरस का, ये वाला प्रोटीन में एम्पलीफाई करूँगा उसका होस्ट का, इन दोनों को मैं प्लाज्मिड में ऐड करूँगा, इसको अलहदा प्लाज्मिड में, इसको अलहदा प्लाज्मिड में। उस प्लाज्मिड में ऐड करने के बाद मैं इससे पहले एक और डोमेन ऐड कर दूंगा, इस गैल4 का एक्टिवेटिंग डोमेन, और इस X प्रोटीन के साथ मैं बाइंडिंग डोमेन, दिस कुड बी, ये हम शफल भी कर सकते हैं, कोई इस तरह वो नहीं होता, हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। ठीक है, अब जब ये प्रोटीन बनेंगे X एंड Y, और ये फ्यूज्ड होंगे विद दिस वन विल बी फ्यूज्ड विद एक्टिवेटिंग डोमेन, और दिस वन विल बी फ्यूज्ड विद, इसको हम X कह देते हैं, इसको हम Y कह देते हैं। ठीक है, अच्छा अब हमने देखना है कि ये दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अगर ये दो प्रोटीन्स हमने देखने हैं कि ये इंटरेक्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। सो अगर ये दो प्रोटीन इंटरेक्ट कर रहे हुए, तो इसके साथ हमने एक्टिवेटिंग डोमेन ऐड किया हुआ है। ठीक है, और इसके साथ हमने इसके साथ हमने बाइंडिंग डोमेन ऐड किया है। ठीक है, तो बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेटिंग डोमेन जो है, ये हम देखेंगे कि अगर ये दोनों इंटरेक्ट कर रहे हुए, तो ये दोनों जो डोमेन्स हैं ये करीब आ जाएंगे, एंड दिस विल बाइंड देयर, और ये इस रिपोर्टर जीन को एक्टिवेट कर देंगे, बिकॉज दिस विल बाइंड दिस अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस। ठीक है, तो कोई भी दो प्रोटीन्स हो,
हमने देखना है कि वो इंटरेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो इस यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम के थ्रू, या इसको हम प्रोटीन फ्रैगमेंट कॉम्प्लीमेंटेशन सिस्टम भी कह सकते हैं, तो इसके थ्रू हम डिटरमिन कर सकते हैं विद इन द वेट लैब। एम आई क्लियर शफीक? ये सर क्लियर हो गया। सर एक और हाँ बात ये थी कि जी। ये जो हमने टू हाइब्रिड सिस्टम में जो रिपोर्टर जीन बाद में ट्रांसक्रिप्ट हो रही है, रिवर्स टू हाइब्रिड सिस्टम में भी सेम इसी तरह मेथड है, बस वहां पे जो रिपोर्टर जीन है उसको हमने स्पेसिफाई करवा दिया URA3 के साथ, जो सिलेक्टेबल मार्कर है। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिल्कुल इसी तरह है। और ठीक है वहाँ सर। पे वहाँ पे देखें ये रिवर्स टू हाइब्रिड, वहाँ पे अगर ये इंटरेक्ट करेंगे तो सेल डेथ हो जाएगी। अगर जैसे नहीं प्रोटीन करेंगे वर्क तो करेगी। हाँ, हाँ जी। अगर यहाँ पे अगर इंटरेक्ट करेंगे तो हमें हमें जो है वो पॉजिटिव आएगा, यहाँ पे अगर इंटरेक्ट करेंगे तो ये नेगेटिव आएगा। इस वजह से ओके इसको सर। रिवर्स कहा गया है। ठीक है, थैंक यू। ओके, नो वरीज। अच्छा जी कौन सर। जी जी प्लीज फरीन। सर ये टीएम भी बता दें सर, ये टीएम जो लगा हुआ है इधर एक्टिवेटिंग डोमेन के साथ, टी ये कोई एम, ट्रांसक्रिप्शन से रिलेटेड है क्या चीज से? वेट वेट, ये असल में ये स्लाइड बहुत पुरानी है, और मैं एक्चुअली वेट इसको देख लेते हैं, ये बहुत पुराने स्लाइड्स हैं। ये ट्रांसमेम्ब्रेन डोमेन नहीं होता वेट, and this is the yeast to hybrid। मुझे यहाँ पे इसमें लिखना चाहिए था। Let's see। Yeast to hybrid is check it out। यहाँ पे जो यहाँ तो TM नहीं है। चलिए मुझे मिल जाएगा तो आई विल लेट यू नो। ये पुरानी स्लाइड्स हैं तो इस वजह से मेरे जहन से निकल गई ये चीज़ें, लेकिन मुझे मिल गया तो मैं आपको बता दूंगा फ्री, डोंट यू वरी। ओके सर। सर ठीक है, ये बस बता दें हाँ कि ये जी जी। इसे बेट प्लाज्मिड एक को कह रहे हैं और एक को प्रे प्लाज्मिड क्यों कह रहे हैं सर? ओके, सो दीज आर दी टू प्लाज्मिड्स। एक को हम लाइक ये जो बाइंडिंग डोमेन है ना, बाइंडिंग डोमेन, सो ये बाइंड करेगा यहाँ पे, और बैट जो है वो जब बाइंड करेगा, लाइक एक इस असल में एक को बैट और दूसरे को प्रे, इस वजह से करें कि लाइक एक को हम एज अ लाइक बैट यूज करेंगे और दूसरे को एज अ प्रे यूज करेंगे। लाइक बाइंडिंग बाइंडिंग डोमेन यहाँ पे देखें, बाइंडिंग डोमेन ने यहाँ पे बाइंड करना है डीएनए के साथ। जब ये यहाँ पे बाइंड करेगा तो दिस विल बी अ बैट, और प्रे इसका ये वाला प्रे हो जाएगा। एक्टिवेटिंग डोमेन ये जब बाइंड करेगा इसके साथ, सो दिस विल बी लाइक कंसिडर्ड एज अ बैट to, and this will be as a prey because this will bind there, so this will wait for its prey to bind there। ओके ठीक है, ठीक है। और ये जब बाइंड करेगा तो इसके बाद ये फिर पूरा सिस्टम ये एक्टिवेट होगा, ये ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल कंप्लीट, ये एक्टिवेटिंग डोमेन और बाइंडिंग डोमेन, ये पूरा सिस्टम कंप्लीट होगा, और उसके बाद फिर एक्टिवेशन होगी। ठीक है, फातिमा रमजान। जी फातिमा। सर मैं आपसे पूछ रही थी कि थ्री हाइब्रिड सिस्टम में जेड क्या है? अच्छा, अब कुछ केसेस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास दो प्रोटीन के बजाय हमारे पास वी नो कि तीन प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, ए बी और सी। तीन डिफरेंट प्रोटीन्स हैं, दे गोना इंटरेक्ट विद वन अनदर। लेकिन ये ए और सी डायरेक्टली आपस में इंटरेक्ट नहीं कर रहे, ये किसी थर्ड प्रोटीन के थ्रू इंटरेक्ट कर रहे हैं। तो हमने ये चेक करना होता है कि ये इसमें कौन सा प्रोटीन जो है वो मेडिएट कर रहा है, दरमियान में है।
तो उसको हमने पहले कंप्यूटेशन चेक किया होता है, एंड वी वांट टू चेक आइदर दे कैन इंटरेक्ट in the wet lab or not, in vivo or not, or in vitro or not. So for that, एक प्रोटीन को हम बाइंडिंग डोमेन के साथ अटैच कर लेते हैं, दूसरे प्रोटीन को हम एक्टिवेटिंग डोमेन के साथ अटैच कर लेते हैं, ठीक है, और दरमियान वाला प्रोटीन जो है वो वैसे ही ऐड कर देते हैं, उसमें साथ कोई वो नहीं है। तो अगर ये दरमियान वाला प्रोटीन लाइक बी हम यूज ना करें तो एक्स और वाई जो है इंटरेक्ट नहीं करेंगे, ये ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी। लेकिन हम अगर उस सिस्टम में बी प्रोटीन को वैसे ही ऐड कर दें तो वो जब ऐड होगा तो ये इसके एक डोमेन के साथ एक्स के साथ अटैच हो जाएगा, दूसरा वाई के साथ अटैच हो गया, और ये पूरा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा इस तरह, एंड द ट्रांसक्रिप्शन विल स्टार्ट अकरिंग। एम आई क्लियर? Yes, sir. ओके, हु विल एक्सप्लेन दिस नाउ? सर मैं कहूँ जी नौरीन प्लीज। सर इसके अंदर हम लोगों ने सब 2 हाइब्रिड स्क्रीनिंग पढ़े हैं, तो हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन देखने लगे हैं। तो सबसे पहले हम लोग 2 हाइब्रिड सिस्टम के अंदर हम 2 प्लाज्मिड्स हैं, बैक प्लाज्मिड और प्रे प्लाज्मिड, और सबसे पहले हम लोगों ने यूएफ अपस्ट्रीम सीक्वेंस को देखना है। उसके ऊपर हमारे जो है एक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर बाइंड होगा। ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जैसे ही बाइंड होता है, ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर की 2 डोमेन्स है, एक है बाइंडिंग डोमेन और एक है एक्टिवेटिंग डोमेन। बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेटिंग डोमेन दोनों के साथ दोनों प्रोटीन एक्स और वाई अटैच है। अगर इनकी इंटरेक्शन हो जाती है तो रिपोर्टर जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो जाएगी और रिपोर्टर जीन ट्रांसक्राइब कर जाएगी और हम लोगों को प्रोटीन का रिजल्ट मिल जाएगा, और इससे हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा कि इन दोनों के दरमियान जो प्रोटीन एक्स और वाई है उनके दरमियान इंटरेक्शन हो सकती है। लेकिन अगर हम लोग 3 हाइब्रिड सिस्टम की बात करें तो उसके अंदर हम लोगों को एक मीडिएटर की जरूरत होती है इंटरेक्शन चेक करने के लिए। उस पर भी वही सारा है कि हम लोग यूएस से अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस है, उसके ऊपर भी बाइंडिंग डोमेन आकर बाइंड करेगी और दूसरी तरफ एक्टिवेटिंग डोमेन है और साथ एक्स और वाई प्रोटीन है। लेकिन यहाँ पर जेड एज अ मीडिएटर काम करेगा और इनकी इंटरेक्शन करवाएगा, और फिर हमारी जो रिपोर्टर जीन है उसकी ट्रांसक्रिप्शन होगी और ट्रांसक्राइब होगी। लेकिन अगर हम बात करें रिवर्स 2 हाइब्रिड सिस्टम की, तो इसमें रिवर्स प्रोसेस है। इसके अंदर क्या होता है कि हम लोग ड्रग की इंटरेक्शन चेक कर रहे होते हैं प्रोटीन के साथ। तो सबसे पहले हमारा वही कि हम लोगों ने पहले जो यूएएस है अपस्ट्रीम एक्टिवेटिंग सीक्वेंस, उसके ऊपर आकर जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर है उसकी डोमेन बाइंडिंग डोमेन आकर बाइंड कर जाएगी और दूसरी तरफ एक्टिवेटिंग डोमेन है, और उनके दरमियान जो प्रोटीन साथ अटैच थी वो इनकी इंटरेक्शन शो की हुई है। अब ड्रग की हमने इंटरेक्शन प्रोटीन के साथ देखनी है, तो हम लोग ये देखेंगे कि अगर इनकी ड्रग की प्रोटीन के साथ इंटरेक्शन है तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। लेकिन अगर ड्रग की इसके साथ इंटरेक्शन नहीं है एक्स और वाई की, जैसे कि यहाँ पे शो हो रहा है कि एक्स और वाई खुद इंटरेक्ट कर रही हैं, तो यहाँ पर हमारे पास एक URA3 एक सिलेक्टेबल मार्कर के तौर पे काम करता है, जिसका काम है कि एंजाइम को इनकोड करना, जो कि ऑर्थीडीन 5-फॉस्फेट डीकार्बोक्सिलेज है, उसने इनकोड करना है। और उसका काम ये है कि उसने 5 फ्लोरो और ऑरोटिक एसिड को इनकोड करना, कन्वर्ट कर देना है टॉक्सिक मेटाबोलाइट्स में, और सेल की डेथ कर देनी है। अगर हमारे पास सेल की डेथ हो जाए तो इसका मतलब ड्रग की प्रोटीन के साथ कोई इंटरेक्शन नहीं है। लेकिन अगर ड्रग इंटरेक्ट कर जाता है प्रोटीन के साथ तो प्रोटीन खुद अपने की इंटरेक्शन नहीं करेंगी और सेल की डेथ नहीं होगी और सेल की ग्रोथ हो जाएगी। और लास्ट में हमारे पास मेमेलियन 2 हाइब्रिड सिस्टम है, उसके अंदर हम 2 प्लाज्मिड्स यूज करें। एक प्रे प्लाज्मिड है जिसके ऊपर हम लोगों ने एक्टिवेटिंग डोमेन है, और एक तरफ वेट प्लाज्मिड है उसके ऊपर बाइंडिंग डोमेन है। ये दोनों डोमेन जो हम विद इन द सेल काम कर रही हैं, तो ये दोनों डोमेन्स होंगी, और अगर इनके दरमियान इंटरेक्शन हुई तो ये रिपोर्टर जीन जो हम लोगों ने यूएस रिपोर्टर प्लाज्मिड के ऊपर लगा हुआ है इसकी ट्रांसक्रिप्शन कर देंगी और हमारे पास फिर रिजल्ट आ जाएगा। और ये भी हम लोग प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन के लिए सिस्टम यूज करते हैं। जी ग्रेट ग्रेट। एंड हु विल एक्सप्लेन नेक्स्ट? इसको आई वांट अनदर explanation for this as well. Who will explain? Zumar? Zumar is there. Zumar है? Zumar आवाज आ रही है आपको? मुंतहा मुंतहा रबिया जवाद आप कर लो, चलें। Yes.
सर इसमें आपने बताया अभी कि हम लोग इसमें प्रोटीन इंट्रैक्शन चेक करते हैं और ये मेथड कौन सा है, ये 2 हाइब्रिड स्क्रीनिंग मेथड है। इसको हम इसके अलावा प्रोटीन फ्रेगमेंट कॉम्प्लीमेंटेशन ऐसे भी कहते हैं, जिसके अंदर कुछ सर्टेन फैक्टर्स हैं, एक अपस्ट्रीम एक्टिवेशन फैक्टर है और इसके अलावा ये गाल 4 प्रोटीन्स है जिसकी 2 डोमेन्स आती हैं, एक बाइंडिंग डोमेन आती है और एक एक्टिवेटिंग डोमेन आती है। इन 2 डोमेन्स के ऊपर जो है वो 2 प्रोटीन्स उनका इंट्रैक्शन हमने चेक करना होता है। एक जो है वो बाइंडिंग डोमेन के साथ बाइंड करती है और एक डिफरेंट प्रोटीन जो है वो एक्टिवेटिंग डोमेन के साथ बाइंड करती है। और ये 2 हाइब्रिड सिस्टम के अंदर आता है जब हम लोग ये बाइंडिंग डोमेन जो है जब ये यूएएस के साथ बाइंड करती है, तो ये बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेटिंग डोमेन अगर आपस में एक दूसरे के क्लोज कॉन्टैक्ट में आएंगी तो ये जो एक्स और वाई प्रोटीन है ये आपस में बाइंड कर जाएंगी और आगे जो है वो रिपोर्टर जीन को ट्रांसक्राइब कर देंगी। इसी तरह एक 3 हाइब्रिड सिस्टम में इस तरह होता है कि इसमें सेम मैकेनिज्म है, लेकिन यहाँ पर हम लोगों ने जो प्रोटीन्स यूज़ किए हैं वो 3 प्रोटीन्स है, एक्स, वाई एंड जी। जब बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेटिंग डोमेन आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट में आती हैं, जब बाइंडिंग डोमेन यूएएस पे अटैच होती है, तो इसके अलावा यहाँ पर एक्स वाई जी के साथ साथ यहाँ पर एक्स और वाई के साथ साथ यहाँ पर जी एक थर्ड प्रोटीन की अटैच होती है, जो हमने किसी के साथ बाइंड नहीं की होती, ऐसे ही जो हम लोगों ने अपने टेस्ट में इन्वॉल्व की हुई होती है। और जब ये तीनों प्रोटीन्स आपस में बाइंड होती हैं तो यहाँ से रिपोर्टर जीन आगे ट्रांसक्राइब हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पर अगर कोई ऐसा फैक्टर हो जिसकी ट्रांसक्रिप्शन से हमारे पास कोई टॉक्सिक कंपाउंड प्रोडक्शन हो रही है, तो उसको हम ड्रग्स यूज़ करके उसको हम रिप्रेस भी करवा सकते हैं। और इस मेथड को हमने रिवर्स 2 हाइब्रिड सिस्टम कहा है, जिसके अंदर सेम मैकेनिज्म ऐसा हो रहा है कि जब ये दोनों प्रोटीन्स आपस में क्लोज कॉन्टैक्ट करती हैं तो ये URA3 प्रोटीन को जो है वो जीन को जो है वो ट्रांसक्राइब करवा देती हैं और जब ये प्रोडक्ट प्रोड्यूस होती है ये 5-FOA यानी फ्लोरोओरोटिक एसिड को जो है वो कन्वर्ट कर देती हैं टॉक्सिक कंपाउंड में, जिसकी वजह से अगर हम यहाँ पर कोई ऐसी ड्रग यूज़ करते हैं तो वो इस वाई डोमेन प्रोटीन के साथ जाके बाइंड करेगी, जिसकी वजह से हमारे ये URA3 की ट्रांसक्रिप्शन नहीं होगी और इस तरह से कंपाउंड टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस नहीं होगा। अगर ये टॉक्सिक कंपाउंड प्रोड्यूस हो जाता है तो यहाँ पर सेल की डेथ हो सकती थी। और जो फोर्थ मैकेनिज्म आपने बताया यहाँ पर मैमेलियन 2 हाइब्रिड सिस्टम, इसके अंदर ये चीज़ है कि हम लोगों ने प्लाज्मिड के अंदर अपनी दोनों प्रोटीन्स लगाई हैं, एक्टिवेटिंग डोमेन और बाइंडिंग डोमेन की, और इन्हीं के साथ साथ हम लोगों ने अपनी 2 डिफरेंट प्रोटीन्स ऐड करवा दी हैं, जिससे एक जो है वो हमारे पास वाई के साथ एक्टिवेटिंग डोमेन बाइंड हो गई है और एक्स के साथ बाइंडिंग डोमेन बाइंड हो गई है। फिर हम इसके अंदर जब रिपोर्टर जीन ऐड करेंगे और अपना UAS प्लाज्मिड ऐड करेंगे, तो जब हम ट्रांसफेक्शन करेंगे इसके अंदर मेमेलियन सेल के, तो हमारे मेमेलियन सेल्स की कॉपीज बन जाएगी। एग्जैक्टली ठीक हो गया। अच्छा, तो क्लास समझ आ गई है इसकी? वो क्लास बिकॉज आगे जाके सारा कुछ बेसिस इसी पे करेगा। ठीक है, आयशा आपको समझ आ गई है? आयशा मसूद, ओके। जन्नत इम्तियाज, समझ आ गई कि नहीं? समझ आई है? सर समझ आई है, मेरे नेट का थोड़ा इशू है तो मैं फिर रिकॉर्डिंग सुनती होती हूँ बाद में। ठीक हो गया। अच्छा, so this is what has been known, like 5-FOA will give, if the URA is positive, like if the URA is producing, so it will give to the death and give rise to the death, and if 5 prime FOA is there and URA is absent, so the cell will be live. The cell death will not occur. This has been taught previously in detail. So this is the detail, like this system was firstly described in 1989 by Field and Song using Saccharomyces cerevisiae as biological model, and this yeast 2 hybrid is based on the functional reconstitution of the yeast transcription factor GAL4 and subsequent activation of selective reporter such as HIS3, and to test 2 proteins for interaction. 2 protein expression constructs were made. The first one, the binding domain, and the other one was activating domain, and yeast 2 cells are transformed in these constructs. So these were actually transferred to the yeast cells, and these yeast cells then produce these proteins, and they interact and they give rise to the whole system, like we can determine like the proteins are interacting or not. Am I clear?
Yes, sir. Okay, and for further things, okay, so um, the GAL4 transcription factor is a positive regulation of gene expression, that is galactose induced genes, means those genes that are induced by galactose, so they will be activated by the transcription GAL4. So this protein represents a large fungal family of transcription factor. GAL4 family means this will be this transcription factor. We talked about this transcription factor, but this is a member of a large transcription family like this GAL4, and which include 50 members in the yeast, like only in the yeast it contains 50 members, 50 different types of transcription factors that activate galactose induced genes. The OA, F1, PIP2, PDR1, PDR3, LEU3. So these are different types of the transcription factors, and they all like are members of GAL4 family. So if when we talk about GAL4, that means either we are talking about OAF1, PIP2, PDR1, PDR3, and so on. So these may be one of these things. So this GAL4 is not an individual protein. This is a family of proteins. So one of the protein could be used as GAL4. आपको समझ आ रही है? Like अगर मैं कहूँ कि like I am using mice, so mice is not an individual, mice is a group of animals. So उसमें से किसी भी को mice number 1, 2, 3 Balpsy कोई भी मैं उठा लूँ, so that's an individual mice. समझ आ रही है? So that's the GAL4 is actually a family of the proteins of transcription factor. And the transcription of a reporter gene does not occur until BAT, BDX, and the prey like ARDY interact with one another to form a functional GAL4 transcription factor. So when X and Y come closer to each other, they recognize one another, they bind with one another. So the BD and AD will come closer, and they will constitute an active transcription factor. Thus, the interaction between proteins can be inferred by the presence of product resultant of the reporter gene expression. So the reporter gene will express if these two proteins come closer. In cases in which the reporter gene is expresses enzyme that allow the yeast to synthesize essential amino acid or nucleotide, yeast growth under selective media conditions indicate that the two proteins testing are interacting. This is very important point. Like if we want to express a gene which is too much important to synthesize a specific product, and that specific product is like essential amino acid, so हमने क्या करना है, what we will do, we will not add that essential amino acid in the media. Got it or not? Yes, sir. Like if we have a media, and we want to know like a specific bacteria, the specific yeast can grow there or not, what we will do, we will like and the reporter system, if the reporter system is like, if we when using the reporter system, the reporter gene is, if that is encoding some important amino acid, so media में हमने वो amino acid add नहीं करना, we will not use that specific amino acid in the media. When we do not use that specific amino acid in the media, so these cells will need to produce their own that very specific amino acid. ठीक है? So and the reporter gene is for that. So अगर दो protein interact कर रहे हैं, so what they will do, they will express their own amino acid, that very specific amino acid. वो अपना specific amino acid खुद produce करेंगे और grow करेंगे, जिसमें जो दो प्रोटीन बाइंड नहीं करेंगे और ये वो specific amino acid नहीं बनाएंगे, so these yeast cannot grow there. Am I clear or not?
or should I explain? क्लियर है सर? क्लियर है ना? शफीक आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें, हो सकता है किसी को सर इसमें इस तरह सर इसमें इस तरह हम कह रहे थे जिस तरह कि हमने पूरा ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर जो था उसके बाद रिपोर्टर जीन आ रही थी, तो अगर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर यानी बाइंडिंग डोमेन और एक्टिवेटिंग डोमेन अगर सैम्पल हो जाए तो रिपोर्टर जीन की ट्रांसक्रिप्शन पॉसिबल है। तो अगर हमने किसी भी कल्चर या मीडियम के अंदर देखना है कि हमारी रिपोर्टर जीन यानी प्रोटीन वर्क कर रही है और रिपोर्टर जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, तो हम उस तरह करेंगे जो रिपोर्टर जीन जिस एंजाइम के लिए रिस्पॉन्सिबल है और वो फर्ज करें कोई अमीनो एसिड को आगे सिंथेसाइज कर रहा है, तो हम उसी कल्चर के अंदर उस अमीनो एसिड की डेफिशिएंसी कर लेंगे। अगर वो रिपोर्टर जीन की ट्रांसक्रिप्शन हो रही है और स्पेसिफिक एंजाइम बन रहा हुआ, तो जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ही अपना अमीनो एसिड वहां पे प्रोड्यूस करके सर्वाइव कर देगा। और अगर वो ट्रांसक्रिप्शन रिपोर्टर जीन की ट्रांसक्रिप्शन नहीं हुई और अमीनो एसिड नहीं बना, तो सेल मतलब सेल ग्रो नहीं करेगा, तो हमें पता चल जाएगा कि हमारी जो प्रोटीन है वो असेंबल नहीं हुई। exactly. Great. And okay, so history. What is history? This is a gene found in the yeast that encodes a protein, imidazole, glycerol phosphate dehydratase, which catalyze the sixth step in the histidine biosynthesis. So it is important in the histidine biosynthesis, and this his B is analog in the E. coli, like in the bacteria, his B is there, in the yeast, his 3 is there. So these two proteins are analogs of one another. So they can be, they will be producing histidine, and if we remove histidine and we do not add histidine, this will be a test either the proteins are interacting or not. Am I clear? This is the application actually. This is how we can use. So his3 can be used as a reporter gene. In this case, his3 can be used as a reporter gene. In case of like that one, the reporter gene could be his3. Yeah, or like here URA3 is used. So next to it is there are certain limitations of yeast two-hybrid system, and the limitations are it uses yeast as the main system, which can be a problem when studying proteins that contain mammalian specific post-translation modifications. So this the yeast two-hybrid system, like if we have two proteins, two human proteins, so there will be specific post-translation modifications. That will mean that when the proteins are produced, the host system will specifically modify some of the residues, and that will depend on the host system. Like in animals, certain amino acids or certain proteins will be modified. Maybe in mice or in other animals, the same post-translation modification will not occur. This will be the same thing if two proteins, we want to know either they are interacting or not, and if they are human proteins or if they are mice proteins, and we are expressing those in the yeast. So maybe those two proteins, they interact in the yeast, and we say that these two proteins are interacting. But maybe in the host system, like in the mice or in the human, the original system, or in the plants, maybe there are certain modifications that are being occurred in those very specific organisms, and due to those modifications, maybe those two proteins may not interact, but in yeast they interact. So this is a limitation of this yeast two-hybrid system, because we are limited to the yeast. And the other thing is the number of protein-protein interactions identified is usually low because of high false negative rate. False negative means the proteins are interacting, and we say that they are not interacting. And understates membrane proteins. Like membrane proteins, we can the yeast two-hybrid assay is not meant for membrane proteins.
Like there are certain transmembrane proteins. So for transmembrane protein, the transmembrane protein localized on the membrane. But in the yeast 2 hybrid assay, we interact proteins in the cells, inside of the cell. So that environment is not meant for membrane proteins, membrane expressed proteins. Am I clear or not? यस सर सर ये एक था इसमें जो यीस्ट टू हाइब्रिड लिमिटेशन में क्या हम मैमल्स को एज अ होस्ट यूज कर सकते हैं अपना प्लाज्मिड इंसर्ट करने के लिए कि वो टाइम टेकन हो जाएगा प्रोटीन की सिंथेसिस में? मैमल्स में डिटरमिन करना मुश्किल होता है, ओके ठीक है। यीस्ट टू हाइब्रिड से बहुत इजी भी है, बहुत जल्दी ग्रोइंग है, तो इस वजह से वो इजी है उसको स्टडी करना। ठीक है। So who will explain this? जो पहले नहीं किया हुआ जिसने, who will explain? फरहीन is there? फरहीन? यस सर। सर इसमें ये बताया कि हम यीस्ट यूज तो कर लेते हैं लेकिन उसकी सर्टेन लिमिटेशन है, मतलब कि अगर हम उसमें स्टडी करें कुछ प्रोटीन्स को तो उसके अंदर जो स्पेसिफिक पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन है वो हमारे लिए मसला कर सकती हैं। और इसके अलावा प्रोटीन प्रोटीन इंटरेक्शन हैं वो लो हो सकती हैं क्योंकि फॉल्स नेगेटिव रेट की वजह से बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो ट्रांसमेम्ब्रेन्स के लिए नहीं होती हैं। ये दो डिफरेंट बातें हैं, यस के नेगेटिव रेट्स भी हैं और ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन भी एक्सप्रेस नहीं कर सकते। अच्छा, ये पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन से क्या मतलब है? फायजा बताएगी। फायजा? यस सर। जी, what is meant by this post translation modifications? Why this is the limitation for the yeast to have the system? सर ये वो जो प्रोटीन के बनने के बाद उसकी जो मॉडिफिकेशंस होती हैं। जी जी। So how they can affect you yeast to have the system? सर उसके लिगांड में जब उसका लिगांड के साथ इंटरेक्शन होना होता है तो इसलिए वो उसकी प्रॉब्लम हो जाती है। जी। हाँ, प्रॉब्लम हो जाते हैं लेकिन we have discussed this thing like how they are different. फातिमा रमजान, फातिमा? यस सर। जी, how the post translation modification affects or why this is the limitation for yeast to have the सर इसलिए क्योंकि जो ईस्ट है वो इतना ज़्यादा कॉम्प्लेक्स सिस्टम नहीं है जिस तरह का मेमेलियन सिस्टम होता है। तो मेमेलियन में जो पोस्ट ट्रांसलेशन में मिथाइलेशन वगैरह हो जाती है बाद में और पॉली ए टेल ऐड हो जाती है। जी जी। तो इस तरह फिर ईस्ट जो है वो उससे इंटरेक्ट ही नहीं कर सकता। वो अपने आप को बहुत मेमेलियन जो सेल्स हैं अपने आप को प्रोटेक्ट करते हैं। संसा is there. संसा आवाज आ रही है आपको? हारून? यस सर। जी, आप बताइए ट्रांसमेम्ब्रेन जो सॉरी पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, व्हाई दिस इज अ लिमिटेशन फॉर यीस्ट टू हैव से? लाइक हम सर क्यों कह रहे उसके लिए हैं मैं limitation? जी जी। यस सर मैं फिर दोनों पॉइंट्स का ओवरव्यू दे दूं सर। जी जी, प्लीज। ओके सर। तो सर जैसे कि आपने डिस्कस किया कि जो यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम है दैट इज वेरी डिजायरेबल, क्योंकि जो मेमेलियन सेल्स होते हैं दे आर बिट कॉम्प्लिकेटेड, तो उनके बनिस्बत जो है यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम को हम प्रेफर करते हैं। पर इस सिस्टम को प्रेफरेंस के अलावा इसकी कुछ लिमिटेशंस थी, दो लिमिटेशंस हाईलाइट की हुई थी। द फर्स्ट वन वाज के इट यूजेस यीस्ट एज अ मेन होस्ट सिस्टम which can be a problem when studying proteins that contain mammalian specific post translation modifications, क्योंकि जैसा कि फातिमा ने भी डिस्कस किया कि जो mammalian systems हैं they are a bit complicated, they have many defense mechanisms, तो जो mammalian specific modifications होंगी वो yeast to hybrid system उनसे interact ही नहीं कर सकता।
तो उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है, जो उनकी स्टडी है, दैट इज नॉट पॉसिबल विद yeast to hybrid system. Second point is the number of protein-protein interactions identified is usually low because of high false negative rate. अब इसमें ये होता है कि क्योंकि yeast to hybrid system is not that complex, it is a relatively simple system जो कि हमारे लिए बहुत desirable है. तो इसमें ऐसे होता है कि कुछ केसेस में या मोस्ट केसेस में कह सकते हैं आप कि जो प्रोटीन का रेट होता है वो जो है होता ज्यादा है, पर हमें वो कम शो होता है क्योंकि वो उसे डिटेक्ट ही नहीं कर सक रहा होता. दैट इज अ हाई फॉल्स नेगेटिव रेट, एंड देन इट अंडरस्टेटेड. then the second is understating of membrane proteins. अब इसमें ये होता है कि membrane proteins को ये इस वजह से understate करता है because it is the inter cell, ठीक है. तो जो membrane proteins होती हैं उनको ये जो है सही से identify या count नहीं कर सक रहा होता. These are the two limitations to yeast hybrid. Okay, thank you so much. Thank you, Arun. जी बताएं प्लीज. अरुण Yes sir. जी कुछ बताना. No sir, is it adequate ठीक है. sir? हाँ ठीक है. That's good. That's good. That's good. Okay. So so how we can manage the limitation? So in initial studies that utilize yeast to hybrid say proper controls for false positive, for example, when binding domain activates the reporter without the presence of AD were frequently not done, leading to a higher normal false positive rate. सो ये एक केस था कि इसमें क्या था कि पहले हमारे पास एक प्रोटीन है एंड दैट इज हमने एक्टिवेटिंग डोमेन को लाइक बाइंडिंग डोमेन को यूज किया. वी यूज द बाइंडिंग डोमेन विद लाइक विद एक्स प्रोटीन एंड this binding domain actually binds with the target and this then activates the this then activate the reporter gene. So when the binding domain bind with the transcription factor with the binding site, this will activate, and in certain cases without binding of the other protein, without binding of the activating domain, without binding of the activating domain, this without binding it, it activates the system. So at the end, we got to know and we give the result that these two proteins are interacting, but in fact they are not interacted because and we didn't knew that because we didn't use any control. So we need to have a set of experiment in which we only have a part of that experiment in which we only use binding domain with the protein X and the active domain, the activating domain with the activating domain with the protein Y separately. So if they are expressing, that means they are false positive, means they are not positive, but they looks like that they are positive. So they are false positive. This will reduce the rate of false positive. We will understand that this can activate the system. So previously the controls, these are the controls, these are the negative controls. So these controls are used because these controls are used like the binding domain in the absence of activating domain, or activating domain in the absence of binding domain, and let's see either the expression is being is going or not, and the gene is gonna express or not. So the need to use to use these proper controls. So these controls could be used for false positives. So proper controls could be used in order to know either that is false positive or not. And the second of the limitation, how to manage the limitation, is lower
coverage of membrane proteins. So the membrane proteins could not be covered because that is a common sense point, a common sense that membrane proteins will express on the membrane and they will not be present in the cytosol. So what to do with membrane protein? They are like not a good they are not good candidates for a yeast two hybrid system. So what to do then? So have been overcoming by the emergence of yeast two hybrid variants. So there are certain variants now, such as membrane yeast two hybrid system (MYTH). So and another one is split ubiquitin system. So ubiquitin system is used, which are not limited by interaction that occur in the nucleus. So in yeast two hybridase, interaction is occurring in the nucleus because it will interact with the DNA. But now the split ubiquitin system, that will not occur in the nucleus. And the bacterial two hybrid system, now there is a bacterial two hybrid system as well instead of yeast two hybrid system. Am I clear? Excuse me, sir. जी जी सर ये एक पॉइंट में समझ नहीं आया कि सर हम किस तरीके से कौन सा कंट्रोल यूज करके मतलब पता लगाते हैं कि वो खुद एक्टिवेट हुआ है या बाइंडिंग और इंटरेक्शन हुई है कि नहीं. ओके इस पॉइंट को कौन एक्सप्लेन करेगा? फाइका फाइका इज देयर? यस सर. जी आप एक्सप्लेन कर दें तो अगर नहीं हुआ तो आई विल एक्सप्लेन देयर देन आई थिंक यू विल फर्स्ट वाला अंडरस्टैंड. जी 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 फर्स्ट वाला जी जी फर्स्ट सर इसके अंदर आपने बताया था कि जिस तरह हमने पहले डिस्कस किया है कि बाइंडिंग डोमेन होता है हमारे पास और एक हमारे पास एक्टिवेटिंग डोमेन होता है. बाइंडिंग डोमेन के साथ एक्स लगता है और एक्टिवेटिंग डोमेन के साथ वाई लगता है और जब ये दोनों का इंटरेक्शन होता है तो फिर रिपोर्टर जीन एक्टिवेट होती है. लेकिन जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि इसके अंदर जो हमारे बहुत ज्यादा फॉल्स नेगेटिव रेट आ रहा होता है तो हम इसके लिए हमारा हायर देन नॉर्मल फॉल्स पॉजिटिव रेट लेने के लिए हम ये करते हैं कि जो हमारा एक्टिवेटिंग डोमेन होता है जिसके साथ वाई अटैच्ड होती है उसको हम बाइंडिंग डोमेन एक्स के साथ नहीं जुड़ने देते. यानी कि अकेला हम बाइंडिंग डोमेन का कंट्रोल लेते हैं जिसके साथ फ्रीक्वेंटली हम उसको कंट्रोल कर सकते हैं और हमारे पास हायर देन नॉर्मल फॉल्स पॉजिटिव रेट्स आ जाते हैं. एग्जैक्टली अगर आ गए तो इसका मतलब है कि वो फॉल्स पॉजिटिव है. दैट विल सिंपली मीन्स देखें दैट विल सिंपली मीन्स कि यहाँ पे हमने क्या किया कि हम ये दोनों यूज कर रहे हैं ना. तो अगर हम ये कर लें कि ये वाला यूज ना करें, ये वाला यूज ना करें और बाकी सारा कुछ कर लें. सो अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है, अगर ट्रांसक्रिप्शन हो रही है विदाउट यूजिंग दिस वन, सो इसको अगर हम यूज ना करें तो इसको हम कंट्रोल कहते हैं, नेगेटिव कंट्रोल, कि हम ये जो है इसके रिजल्ट नेगेटिव आने चाहिए. ठीक है. सेकंड केस में हम ये वाला यूज नहीं करते, सिर्फ इसको अकेला यूज कर देते हैं. ठीक है. तो अगर इसको भी हम नेगेटिव कंट्रोल कहते हैं, इसके रिजल्ट नहीं आने चाहिए. अगर इसके रिजल्ट आ गए तो इसका मतलब है कि हमारे पास एंड पे जो रिजल्ट आएंगे वो इन दोनों के इंटरेक्शन से नहीं आएंगे, वो वैसे ही आ रहे हैं हमारे पास. ठीक है. तो हमने ये कंट्रोल जरूर लगाने हैं. इसका मतलब है कि बेसल लेवल की जो एक्सप्रेशन है वो वैसे हमारे पास हो रही है बैकग्राउंड में. ठीक है. तो हमें मेक श्योर करना है कि सिस्टम इन दोनों के इंटरेक्शन के बगैर काम नहीं करेगा. Am I clear or not? Yes sir. फरहीन? यस सर. Yes ठीक sir. हो गया. That's great, that's great. और जो सेकंड पॉइंट था वो कौन एक्सप्लेन करेगा? तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में कंट्रोल्स आर मोर इम्पोर्टेंट. कंट्रोल्स को यूज करके ही पता चलाया जाता है. अगर हम कंट्रोल को यूज नहीं करेंगे तो फिर क्या होगा? हमारे पास कौन से रिजल्ट आएंगे? फॉल्स पॉजिटिव. मीन्स के हम समझ रहे होंगे कि वो पॉजिटिव होंगे लेकिन वो फॉल्स होंगे क्योंकि हमने कंट्रोल नहीं लगाए. ठीक है. सो हमारे पास अगर रिजल्ट आएंगे तो हो सकता है वो फॉल्स पॉजिटिव हो. Am I clear? Yes sir. That's good. That's good. Okay, and who will explain the second point?
Come on, who will explain? सर जी फातिमा. सर सेकंड पॉइंट में ये बताया हुआ है कि जो मेम्ब्रेन प्रोटीन्स हैं वो हमारे लिए लिमिटेशंस क्रिएट करती हैं, तो हम उनको ओवरकम इस तरह कर सकते हैं कि हम मेम्ब्रेन ईस्ट 2 हाइब्रिड यूज कर लें और स्प्लिट सिस्टम यूज कर लें, जो फिर इन इंटरेक्शंस के लिमिटेड नहीं है जो न्यूक्लियस में होती हैं, और बैक्टीरियल 2 हाइब्रिड सिस्टम हम बैक्टीरिया में परफॉर्म कर सकते हैं. जी. So ठीक हो गया. कौन थोड़ा सा और एक्सप्लेन करेगा? आई वांट फर्दर एक्सप्लेनेशन फॉर द पॉइंट 2, द सेकंड पॉइंट. Muntaha, is there Muntaha? जी, ये second point I want you more explain. सर मुझे सेकंड पॉइंट की इतनी अच्छी समझ नहीं आई, मुझे पहले पॉइंट की बहुत अच्छे से समझ आ गई है. ठीक हो गया, ठीक है. रबिया नाज, रबिया या सदफ यासीन. पाकीज़ा है, पाकीज़ा डियर. जुमर नसीर. देखिए अगर आप लोग if you don't reply I will remove you from the class because I don't need like inner attendance, like just if you came for just attendance, now your attendance is done, you can go then. Kinza Majid. यस सर. जी. सर मैं सुन रही हूँ, मुझे ना मेरा बार बार डिस्कनेक्ट हो रहा है, तो मुझे किसी समझ नहीं आई. ठीक हो गया, ठीक है. अच्छा देखिए ये सेकंड पॉइंट जो है इसको दिस इज इम्पोर्टेंट एज वेल. लाइक अगर मेरे पास एक प्रोटीन है और लाइक मेम्ब्रेन प्रोटीन का क्या मतलब है, हमारे पास मेम्ब्रेन्स होते हैं ना, डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन. तो उसमें मेम्ब्रेन प्रोटीन होते किस तरह है, लाइक दिस इज मेम्ब्रेन प्रोटीन. लाइक मेम्ब्रेन प्रोटीन में ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन होते हैं, लाइक अगर ये एक्सप्रेस हो रहे होते हैं, सम आर रिसेप्टर्स. तो ये क्या होते हैं कि लाइक NH टर्मिनल होता है इसका, और दिस इज कार्बोक्सिल टर्मिनस COOH एंड दिस इज कार्बोक्सिल टर्मिनस. और यहाँ पे क्या होगा कि जो मेम्ब्रेन के अंदर एरिया है दैट इज हाइड्रोफोबिक. तो यहाँ पे जो अमीनो एसिड्स हैं ये हाइड्रोफोबिक होंगे बिकॉज लाइट बिगेट्स लाइट. तो हाइड्रोफोबिक अमीनो एसिड जो हैं वो यहाँ पे होंगे इन रीजन में, इस रीजन में. लाइक अगर हम इसको डिनोट करना चाहें तो दिस विल बी हाइड्रोफोबिक रीजन, this will be hydrophobic region, this will be hydrophobic region because this is inside of the membrane, so this will be hydrophobic region. अब ये वाले जो region है, जो outer regions हैं which are like this one, these are these regions. so ये regions जो हैं ये hydrophilic होंगे, ये charged होंगे, like some charge will be there. so these charge, like this is the charge will be there. These charge will gonna interact with the aqueous environment similar with this one. so यहाँ पे charged होंगे, ये charged. so these charges will interact with the water and the salt and the solution within the cells. so now these specific types of proteins, they will be transmembrane protein, they will not be present in the like अगर ये protein cytosol के अंदर है तो ये नहीं हो सकता कि ये protein cytosol के अंदर मौजूद हो aqueous solution के अंदर. this will not be like the present in the aqueous solution because it will have some part with the hydrophobic region. तो ये transmembrane proteins ही होनी है इस तरह, ठीक है. so they will be transmembrane proteins. इन प्रोटीन्स को अगर हम लेंगे और साइटोसोल के अंदर अगर हम एक्सप्रेस करना चाहेंगे तो they will not be expressed in the cytosol. They will not be the interaction will not occur in the cytosol. यहाँ पे yeast two hybrid सिस्टम में हम क्या कर रहे होते हैं, yeast two hybrid सिस्टम में दो प्रोटीन्स ने आपस में इंटरेक्ट करना है, उन्होंने न्यूक्लियस के अंदर जाना है,
न्यूक्लियस के अंदर उन्होंने जो है वो डीएनए के साथ इंटरेक्ट करना है। तो ये गैल 4 के साथ बाइंड करेंगे, ये डीएनए के साथ भी बाइंड करेंगे। लेकिन अगर ये ट्रांसमेम्ब्रेन प्रोटीन है तो उसमें हाइड्रोफोबिक रीजन होंगे, स्ट्रेचेस ऑफ हाइड्रोफोबिक रीजन। सो ये उस इन्वायरमेंट में रह नहीं सकते, लाइक दे कैन नॉट बी लाइक इन द सुटेबल कंफर्मेशन टू बी प्रेजेंट इन दैट स्पेसिफिक इन्वायरमेंट, दे हैव टू बी एक्सप्रेस्ड ऑन द मेम्ब्रेन्स। सो उसको ओवरकम करने के लिए एक और सिस्टम फिर डेवलप हुआ, उसको कहा गया मेम्ब्रेन यीस्ट टू हाइब्रिड सिस्टम। इसमें मेम्ब्रेन पे प्रोटीन को एक्सप्रेस करवाया जाता है और फिर इंटरेक्ट करवाया जाता है। कुछ प्रोटीन्स की लिमिटेशंस होती हैं कि वो न्यूक्लियस के अंदर नहीं वो जा सकते। तो वहाँ पे क्या होता है कि स्प्लिट यूबिक्विटिन सिस्टम एक और सिस्टम है जिसको हम साइटोप्लाज्म के अंदर हम दो प्रोटीन्स को इंटरेक्ट करवा सकते हैं। और कुछ केसेस में हम बैक्टीरिया के अंदर एक्सप्रेस करवा सकते हैं। बैक्टीरिया यीस्ट टू हैव द सिस्टम फिर उसे कहेंगे, ठीक है। बैक्टीरिया इज अ प्रोकैरियोट एक्चुअली, तो उसमें न्यूक्लियस वाला कॉन्सेप्ट है नहीं। तो समझ आ रही है? एम आई क्लियर? यस, आगे ये समझ के नहीं है? आगे है सर। आगे समझ। तो ओके, who will explain? And the most favorite and most like famous tool is Yeast Two-Hybrid assay. We have talked about that. So what could be the computational technique to validate the same thing that we do in the lab? So how can we like overcome, like if we don't have computer lab, if we don't have wet lab, or if we have to validate the results of a wet lab, so how we can do that? So there are computational tools, and that computational tool or that computational the area will be called as molecular docking. And docking means to interact a protein with a ligand. Like the ligand could be a protein, the ligand could be a DNA, the ligand could be a molecule, a ligand could be an element. So to exercise chemical action, a ligand interacting with a protein must fit within the binding cavity, just like key in the keyhole. And this is just like the concept of we already do have, and that is enzyme substrate concept, like and the key and keyhole concept. So docking is like a discotheque. It's all about pausing and scoring. So what could be the docking then? Put a ligand in a pocket, like the binding cavity. The pocket will be the binding cavity where the ligand could bind in the protein, and that is known as pause generation. And then after that, maximize the affinity, means the scoring. So docking is all about pause generation and scoring. So that's docking is all about pausing and scoring actually. And what could be the starting point of docking? The ideal could be like what could be the starting point, like how can we start docking? So ideally we need to have a crystal structure. Like if we have a crystalline protein structure, that is an ideal. But if we don't have, we can model a protein. And you already know better than me how to model a protein. We have studied protein modeling, like the use of modeler. So and that is a homology model. So starting point, like ideally we need to have a crystalline structure. But if we don't have a crystalline structure for a protein sequence, we can like still we can model that protein. We can get the structure through homology modeling, and that is like worse, like that is not considered as ideal. And after that, if we have a structure, either a crystalline structure or a homology model, after that, we need a ligand, like the molecule that could interact with that structure, and that is a co-crystallized molecule. So that means if we have a crystallized structure, a crystal structure, normally what people do, they do X-ray crystallography.
But to make the protein sequence stable, people do co-crystallize it with some ligand, like a protein with its substrate, like a protein with its ligand. People do like they interact the two components, and then they crystallize the whole complex, and then after that they do crystallography. So now they get a crystal structure with a co-crystallized molecule. So, uh, so this is the ideal thing. And what the docking is now, docking is post generation and scoring. Now, what we do is to generate a pose, like the ligand to interact in the binding pocket, and then increase the affinity. Try to increase the affinity means try to increase the scoring. So conclusively, docking has 6 parameters, 3 parameters for rotation and 3 parameters for translation, means pick the ligand, drag to fit in the binding site. So that will mean translation. So there are 3 parameters in that, and 3 parameters in the rotation, means we have like if we have a molecule, and like this is the docking site, and if we have a ligand there, and this is the ligand. So now what we will do, we will drag this ligand into the binding pocket, and this will be called as translation. So this will be called as translation. And what rotation is? Rotation is to rotate the ligand within this pocket to increase the scoring. So to increase the scoring, we need to have to check the to change the pose of the ligand there in the pocket. So after that, oh yeah, so सर जी जी करीमुल्लाह, सर इसमें ये पॉइंट समझ नहीं आ रहा, पोस्ट जनरेशन प्लस स्कोरिंग वाला. सो आगे जाके ये चीज़ें और क्लेरिफाई हो रही है. लाइक सबसे पहले इस तरह किया जाता है कि पोस्ट को जनरेट किया जाता है, मींस के टू टेक द लिगेंड एंड ड्रैग दैट इनटू द पॉकेट, इनटू द एक्टिव साइट. आफ्टर दैट उसको फिर रोटेट किया जाता है, रोटेट किया जाता है ताकि स्कोरिंग देखी जाए. लाइक अगर कोई एक लोकेशन है और इसमें यहाँ पे अगर मॉलिक्यूल इस तरह पड़ा हुआ है, सो हो सकता है कि उसका स्कोर ठीक ना आए, लाइक स्कोर ठीक ना आए. लेकिन अगर ये मॉलिक्यूल इस तरह है यहाँ पे, तो हो सकता है दिस इज अ बेस्ट कंफर्मेशन फॉर दैट, और ये उसका स्कोर जो है वो बेटर आए. ठीक है. सो और so this is all about pose generation and scoring. So आगे जाके ये चीज़ें explain हो रही हैं. Don't you worry for that like so much, like ये यहीं पे ख़त्म नहीं हो रहा. We have to like go through all these steps in detail actually. Okay, who will tell me like how much you understand about this? Excuse me, sir. जी करीम. सर ये जो पोस्ट जनरेशन है ये ट्रांसलेशन ही है ना? जी ट्रांसलेशन ही है. Exactly. Rabia, can you explain? यस सर. सर जी यहाँ प्लीज. पर अभी हमने ये पढ़ा है कि कंप्यूटेशनल मेथड के अंदर मॉलिक्यूलर डॉकिंग आती है. डॉकिंग हमारे पास एक प्रोसेस है जिसके अंदर हम लिगेंड और प्रोटीन का इंट्रैक्शन करते हैं, और इसके अंदर 2 स्टेप्स आ जाते हैं, पोस्ट जनरेशन और स्कोरिंग का. क्योंकि सबसे पहले जो है हम अपने लिगेंड को पुट करते हैं बाइंडिंग पॉकेट के अंदर, यानी जो बाइंडिंग साइट होती है प्रोटीन्स के अंदर, और इसको हम कहते हैं पोस्ट जनरेशन. उसके बाद हम लोगों ने एफिनिटी को मैक्सिमाइज करना होता है जिसको हम कहते हैं स्कोरिंग. इस तरह से जो है वो इसके लिए जो हमें स्टार्टिंग पॉइंट्स रिक्वायर्ड होते हैं, सबसे पहले तो एक क्रिस्टल स्ट्रक्चर रिक्वायर्ड होता है प्रोटीन का, या तो हम उसका क्रिस्टल स्ट्रक्चर ले लेते हैं या होमोलॉजी मॉडल ले लेते हैं. और इसके अलावा जो है हमें एक लिगेंड रिक्वायर्ड होता है, वो मॉलिक्यूल जो हमारे साथ हमारी प्रोटीन के साथ उसकी बाइंडिंग साइट पे इंटरेक्ट करेगा, और ये को क्रिस्टलाइज्ड मॉलिक्यूल होता है. उसके बाद जो है वो डॉकिंग के जो है वो 6 पैरामीटर्स होते हैं
जिसमें 3 पैरामीटर्स रोटेशन के लिए रिक्वायर्ड होते हैं, यानी रोटेशन हमें चेक करनी होती है, लिगेंड को रोटेट करना होता है बाइंडिंग साइड के ऊपर, तो उसकी स्कोरिंग को इंक्रीज करने के लिए और एफिनिटी को इंक्रीज करने के लिए। इसके अलावा हमारे पास जो 3 पैरामीटर्स होते हैं वो ट्रांसलेशन के लिए होते हैं, यानी हमें अपने लिगेंड को जो है वो पिक करके अपने बाइंडिंग से पॉकेट जो है उसके अंदर ड्रैग करना होता है, उसके अंदर फिक्स करना होता है। So that's it. And next is a root mean square deviation. So this is important in a sense that on the root mean square deviation value, one can determine the structure, one can determine the docking is like the structure is okay, the docking is being like we can rely upon. Okay, and the most commonly used this is actually the most commonly used quantitative measure of the similarity between two superimposed atomic coordinates. So this is the quantitative measure actually, and this is commonly used, and this is to check the similarity between, like if we have if we have a molecule and we have one another molecule, like that another molecule is like this. So what we will do, we will superimpose this molecule over this molecule, and to check either they are they are okay or not. So what actually do we do? This is a quantitative measure. This will give us some measurement, and this is actually the similarity between two superimposed atomic coordinates. So this is about to check either the two structures, they have similarities between different atomic coordinates, different regions within the structure. So how we can determine that? We can determine that through RMSD, this root mean square deviation, and that's it. So superb is if we get less than 0.5 angstrom RMSD. So the lesser, the better. So really good if we get up to 1.5 angstrom RMSD, it is good. But if we get less than 2 angstrom, it's considered fair. But if we get 3 angstrom, so we cannot rely upon that structure. So the higher the value of the RMSD, the lesser the confidence value. So two major problems are with RMSD. So we should also consider this thing as well. If we get 3 RMSD, but we cannot say that this is not okay, because we have to consider two things before deciding upon the RMSD. And the one thing is size dependency. RMSD is dependent on the size. When the size is more, the RMSD value can be more. And the second one is symmetry artifacts. Symmetry artifacts is like if the oxygen is here at this location, or here at this location in carbonyl carbon carboxyl group. So if this oxygen will give rise to a different result, this oxygen will give rise to different result, even though they are same oxygen atoms. So these are the two problems with RMSD. The RMSD will depend upon size. Also, it will have to it will differ with the symmetry. And the larger ligands, larger RMSD may be tolerated. So if we have larger ligands, so we can tolerate the larger RMSD value. Am I clear or not? यस सर। सर एक बात Yes, बताएं, sir. आरएमएसटी की वैल्यू जो है ये हम लोग डॉकिंग से पहले फाइंड करेंगे ना? ये जो है डॉकिंग से पहले भी है, डॉकिंग के बाद भी होती है जी। सर
अभी स्ट्रक्चर हम के लोग लिए, जो है ये स्ट्रक्चर के लिए होती है ना, लाइक अगर हमने स्ट्रक्चर को डिटरमिन किया हुआ है, फिर हम ये मालूम करते हैं, लाइक होमोलॉजी मॉडल हमने बनाया हुआ है, तो हमने RMSD वैल्यू इसकी डिटरमिन करनी है कि ये जिस मॉडल को देख के हमने बनाया है मॉडल, तो ये इसकी RMSD वैल्यू कितनी है, ताकि हमें पता चले कोई क्वांटिटेटिव मेजर हो कि हम ये कह सकें कि हमारा मॉडल जो है वो कितना रिलायबल है. So RMSD value is one of the measure to quantify that. जी सर ठीक है. ठीक है. अच्छा, कौन एक्सप्लेन करेगा इसको? एक्सक्यूज मी सर. जी जी फरीन. सर मैंने ये पूछना था, अगर ये दो प्रॉब्लम्स हैं साइज डिपेंडेंसी वगैरह, तो सर अगर हम इन प्रॉब्लम्स को भी देख रहे हैं लेकिन अगर फिर हमारे पास 3 एंगस्ट्रॉम नहीं आता तो भी हम अनसर्टेन ही उसको कहेंगे. हाँ, ये असल में इस तरह है ना कि नॉर्मली ये हमारे पास 2 से कम आएगी रूट मीन स्क्वायर डेविएशन, लेकिन अगर ये ज़्यादा आ जाए तो फिर हमने ये देखना है कि प्रोटीन साइज बहुत ज़्यादा तो नहीं है. तो इफ़ प्रोटीन साइज इज़ मोर, सो दैट मीन्स RMSD value can be tolerated. We can accept the RMSD if that is more than 2 angstrom as well. So ये कुछ केसेस में होता है, अक्सर नहीं होता. अक्सर जो है RMSD is lower. ठीक है. Okay, who will explain? सर मैं करूं? जी प्लीज नूरी. सर आपने इसमें बताया है कि ऐसे दो मॉलिक्यूल्स जो सुपर इम्पोज फॉर्म में है, अगर हम उनमें सिमिलैरिटी चेक करना चाहते हैं तो हम लोग उसकी क्वांटिटेटिव मेजरमेंट कर सकते हैं और वो हम रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के थ्रू कर सकते हैं. अगर हम लोगों को अब उसकी वैल्यू जो रूट मीन स्क्वायर की वैल्यू लेसर देन 0.5 एंगस्ट्रॉम यानी कि 0.5 10⁻⁻10 से लेस होगी तो वो उसका जो रिजल्ट है वो सुपर्ब है, यानी कि वो सबसे बेस्ट रिजल्ट है. लेकिन जैसे जैसे ये वैल्यू ज्यादा होती जाएगी तो उसकी जो कॉन्फिडेंस वैल्यू है वो कम होती जाएगी. इसी तरह आपने बताया कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन के साथ दो प्रॉब्लम्स आती हैं. एक चीज साइज की आती है और दूसरी चीज उसकी सिमेट्री आर्टिफैक्ट्स की आती है. मतलब कि रूट मीन स्क्वायर डेविएशन की वैल्यू साइज पे भी डिपेंड करती है और दूसरी चीज उसकी सिमेट्री आर्टिफैक्ट्स पर डिपेंड करती है. सिमेट्री आर्टिफैक्ट्स का मतलब है कि ऑक्सीजन की पोजीशन क्या है, क्योंकि ऑक्सीजन जिस जगह प्रेजेंट है वो डिफरेंट वैल्यूज देगा RMSD की. तो दोनों ऑक्सीजन को हम डिफरेंट तरह से ट्रीट करते हैं. जैसे कि अगर ऑक्सीजन सेंटर में प्रेजेंट है तो वो RMSD की वैल्यूज डिफरेंट होंगी. इसी तरह अगर ऑक्सीजन कार्बोक्सिल ग्रुप में दूसरी तरफ प्रेजेंट है तो वो उसकी वैल्यू डिफरेंट होगी. तो ये अफेक्ट करती है वैल्यू के ऊपर ऑक्सीजन की पोजिशन. और लास्ट में आपने बताया अगर लिगेंड का साइज जो है वो लार्ज है तो RMSD की वैल्यू भी लार्ज होगी. तो लेकिन हम साइज लार्ज होने की वजह से लिगेंड की हमारे RMSD की वैल्यू जो अगर लार्ज आ भी जाए तो हम टॉलरेट कर लेते हैं. सर जी जी. सो ठीक हो गया. सो इसका मतलब है कि हमने प्रोटीन को मॉडल करने के बाद RMSD वैल्यू मालूम करनी है, और डॉकिंग करने के बाद लाइक प्रोटीन और लिगेंड को इंटरेक्ट करने के बाद फिर भी RMSD मालूम करनी है. ठीक है. सो आफ्टर सर डॉकिंग वी विल डू RMSD, आफ्टर प्रोटीन मॉडलिंग वी विल डू RMSD. जी बताएं. सर जब हमने RMSD में जब दो स्ट्रक्चर्स को सुपर इम्पोज करना है तो RMSD जो है वो जो डिफरेंट बॉन्ड लेंथ बन रही है उनके दरमियान डेविएशन को मेजर करेगा, यानी कंपेयर करेगा बिटवीन स्ट्रक्चर्स. हाँ, लाइक वो प्रोटीन कन्फर्मेशन को देखेगा. लाइक एक सीक्वेंस है वो लाइक स्ट्रक्चर उसका लाइक इस तरह है, मैं वैसे एग्जांपल के तौर पे कह रहा हूँ, और दूसरा जो है वो स्ट्रक्चर हमारे पास आया हुआ है और वो क्योंकि हमें पता नहीं चलता दोनों स्ट्रक्चर अगर डिफरेंट हो तो उसमें माइनर डिफरेंसेस का हमें पता यहाँ पे, तो इस वजह से हमें डिफरेंसेस का पता चल रहा है कि ये बिल्कुल सिंपल से स्ट्रक्चर्स है ना. तो अगर हमारे पास कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है तो उसमें हमें पता नहीं चलता. तो RMSD वैल्यू हमें डिफरेंट रीजन्स में वो बता देगा कि लाइक डिफरेंट कोऑर्डिनेट्स डिफरेंट जगहों पे वो बताएगा कि लाइक हाउ कैन द टू स्ट्रक्चर्स जो हैं वो सेम आ रही है. असल में ये स्ट्रक्चर डिफरेंसेस कहाँ पे आती हैं, हमारे पास अगर एक मॉडल ऑलरेडी मौजूद है और दूसरा जो है हमने मॉडल करना है, तो इसको होमोलॉजी मॉडलिंग के थ्रू हमने मॉडल कर दिया. अब यहाँ पे इस सीक्वेंस में जरूर नहीं है कि दोनों सीक्वेंस 100% आइडेंटिकल हो या सिमिलर हो सकता है यहाँ पे कुछ चेंजेस आए हों, एक न्यूक्लियोटाइड एक अमीनो एसिड चेंज हो, उस एक अमीनो एसिड चेंज की वजह से शायद कंफर्मेशन में चेंज आ जाए. तो
RMSD जो है वो हमें फिर कोऑर्डिनेट्स का बताता होता है कि कोऑर्डिनेट्स कौन कौन सी जगहों पे कोऑर्डिनेट्स जो हैं दे फिट इन देयर। अगर ये मॉडल बिल्कुल सही है तो एक जगह पे डिफरेंसेस हैं तो वो हो सकता है इस म्यूटेशन की वजह से हो, बाकी उसको बिल्कुल फिट आना चाहिए। तो फिर सर उसे हमें सिमिलैरिटी की जगह डिफरेंसेस नहीं दिखाना चाहिए कि कहाँ से डिफरेंस है? हाँ नहीं ये बजाय हमें इसके कि सिमिलैरिटी। नहीं, ये हमें जहाँ जितना इसका सेम होगा ना, इस स्ट्रक्चर के सेम होगा, क्योंकि हमने इसको देख के ये स्ट्रक्चर बनाया हुआ है ना, तो ये जितना सिमिलर होगा द मोर विल बी रिलायबिलिटी विल बी मोर। ठीक है, अब और भी कुछ स्कोर्स हैं, RMSD सिर्फ नहीं है, कुछ और भी स्कोर्स हैं, वी विल बी टॉकिंग अबाउट दोस लेटर ऑन। कुछ और भी स्कोर्स हैं जिनके थ्रू हम डिटरमिन करते हैं कि स्ट्रक्चर जो है वो कितना रिलायबल है, डॉकिंग कितनी रिलायबल है। जी सर। RMSD इज वन ऑफ देम। ओके सर। एंड मूविंग फर्दर, RMSD is one of the assessments of how well a structure matches the known structure. So, and the lower RMSD, the better model is in comparison with the known structure. So, known structure के comparison में हम जो अपना structure बनाया हुआ है वो उसके comparison उसके context में देखते होते हैं कि ये उसका कितना like similar है वो structure, और इसी वजह से RMSD हमें वही चीज़ बता रही होती है in the quantitative measure. So अगर हम इसको देखें तो एक्सरे स्ट्रक्चर ये कुछ बेसिक्स है, हमें इसको समझना चाहिए क्योंकि आगे जाके हमने इसको यूज करना है इन द डॉकिंग। सो एक्सरे स्ट्रक्चर्स जितने भी हमारे पास होते हैं एक्सरे क्रिस्टलोग्राफी के बाद, सो दोज एक्सरे स्ट्रक्चर्स दे डोंट हैव हाइड्रोजन आयंस इंफॉर्मेशन उसमें नहीं होते हैं, ठीक है, and they cannot distinguish between tautomers, they cannot distinguish between rotations. So X-ray structures जो है वो tautomers means ये functional group change है। आप यहाँ पे देखें ये OH है C ये and यहाँ पे देखें this is the different functional group, लेकिन ये tautomer है, structure different structure है। So एक्सरे स्ट्रक्चर्स जो हैं वो हाइड्रोजन आयंस की हमें नहीं बता रहा होता है इंफॉर्मेशन, लाइक ये कार्बन है, दिस इज द कार्बन, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, सो हमें ये नहीं बता रहा होता, ठीक है। सो यहाँ पे हाइड्रोजन नहीं होना, सो ये हाइड्रोजन आयंस जो है ये नहीं, इसके इंफॉर्मेशन ये नहीं देता, ठीक है। सो हाइड्रोजन आयन की इंफॉर्मेशन ये नहीं देता, वन थिंग। एंड द सेकंड थिंग इज अगर कोई कॉम्प्लेक्स जो है या जो मॉलिक्यूल है वो टाटोमर्स है, टाटोमेरिक स्ट्रक्चर में जो एक्सरे स्ट्रक्चर्स हैं वो डिफरेंशिएट नहीं कर सकता, एक्सरे स्ट्रक्चर्स इन दोनों को सेम बताएगा, ये और ये स्ट्रक्चर जो है ये सेम होंगे इन एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी या रोटेशन को एक्सेट्रा, इस तरह की चीज़ों को एक्स्ट्रा क्रिस्टलोग्राफी में इनका पता नहीं चल सकता, they will be same in the X-ray structure. And a pseudo rotation is a set of intramolecular movement to attach groups that is ligands on highly symmetric molecules. So symmetric molecules जो हैं वो वहाँ पे जो intramolecular movements हैं, so those could be pseudo rotation leading to a molecule indistinguishable from the initial one. So अगर एक molecule इस तरह के दो molecules के साथ attach है, so और वो बिल्कुल similar हैं, so उनके rotation का पता नहीं चलेगा, उसका score change नहीं होगा, so that could be a pseudo rotation actually. So this is how it is shown. ये अगर move करेगा, so it will be like in 3 different structures. Okay, so UCSF Chimera is a highly extensible program for interactive visualization and analysis of molecular structures and related data, including density maps, supramolecular assemblies, sequence alignments, docking results, trajectories, conformational ensembles, high quality images and animations can be generated. So UCSF Chimera को use करके, so इसमें UCSF Chimera में हमें क्या मिल सकते हैं, इसके density maps मिल सकते हैं,
सुप्रामोलिकुलर असेंबलीज मिल सकते हैं, सीक्वेंस अलाइनमेंट मिल सकते हैं, डॉकिंग कर सकते हैं. तो ये सारे एनालिसिस हम इसके थ्रू कर सकते हैं UCSF कैमरा के थ्रू. सो और हाई क्वालिटी इमेजेस हम वहाँ से ले सकते हैं, एनिमेशंस हम वहाँ से ले सकते हैं. लाइक अगर डॉकिंग हो रही है तो उसकी एनिमेशन हम वहाँ से ले सकते हैं, एनिमेट करके हम ले सकते हैं. And this is a reference for the UCSF camera, the Journal of Computational Chemistry. And to start with, like अगर हमने docking को start करना है, like how we can do that for you. Please class, this is not a practical class, लेकिन आप लोगों को समझ उस वक्त आएगी like if you do it practically on your own system. अगर इसको आप प्रैक्टिकली अप्लाई करेंगे आपका उस वक्त समझ आएगी. क्लास में हम जस्ट गो थ्रू कर सकते हैं कि हमने वो किस तरह करना है, डॉकिंग किस तरह करनी है. सो सबसे पहले क्या करना है, हाउ वी कुड स्टार्ट, वी शुड इंस्टॉल कैमरा. फॉर कैमरा द लिंक इज देयर, डाउनलोड द कैमरा ऑन योर सिस्टम and also download AutoDock Vina on your system. So you need these two softwares. You need to download them, and after that create a folder named as molecular docking on the desktop. So this is the starting point. Like you need to download the two tools and then create a folder on the desktop, and the rest is, yeah, we have a video and we will go through the video, and then after the video we will discuss the minor points in the video, how we can implement all these things that has been shown in the video. Let's check it out. I would like to introduce our speaker today, Dr. Nurivici. She got her PhD in crystallography and biophysics at the University of Madras, and currently she's a postdoctoral fellow in the Institute. Class, can you hear me? Video की आवाज आ रही है? Yes, sir. Yes, sir. Yes. So we should start now, and you should pay attention, complete attention to this video. Structural biology, drug development, and discovery and development in the Department of Medicinal Chemistry. And she'll be leading today's discussion on molecular docking. And this is something that's near and dear to my heart because when I was doing my PhD, I also did molecular docking and crystallography. So thank you for coming today and speaking with all of us. And we feel that this will be a very interesting and interactive experience. So feel free to ask questions. This is something that you can take with you definitely after at the end of this workshop. So. Thank you, Delia, for the sweet introduction, and thank you all for coming in here. And this talk is going to be completely informal, so you can stop me anywhere if you have any questions, because I'm going to walk you through a test case. So as I keep doing the steps, I want you to stop by in case you have any questions. You can stop by and ask me what is this. And also, I have an exercise for you. I think everyone should have got a handout, so we'll do that in addition. And this is just for the beginner. If people are expertise already, I would really be glad if you could help someone who are like beginners. Okay, and let's start. So today the main aim is to study the protein-ligand interaction through molecular docking and using only open source tools.
That is, we are not going to buy any softwares. I know like a lot of molecular modeling packages, when we do high-end computational screening, we tend to go and buy softwares which are licensed, which is like thousands of dollars. But now, where there are a lot of students who really need it first to learn the basics, and they want to use it in their projects or for their research work. So this is one of the major aim of the talk, where I wanted to make sure like we use everything open source so people can easily access when you're a student or you are in academia. Because these softwares, like a few of them are not open source if you are in the industry. So that is a different licensing. So today we are going to see like what is molecular docking and why is it really needed, and then how are we going to do a molecular docking project, and I'll walk you through the case studies, and also you will have an exercise to work on. First, what is molecular docking? Any idea? Anyone wants to give me anything? Want to define? Yeah. Sure. It's fitting a protein in an active site in the proper configuration or something of the sort. So, yeah. Good. So, in a way, it's right, I would say. So, basically, what we do is like the whole of biology stands on from the fact, like where we have the sequence information, and then we move on to the structural information. And then, once you have your sequence and structure, what is that you want to know? You want to know how the molecules interact within them or with other molecules. So once we keep on getting new sequences in our genome, what happens is we want to know how the interaction of the molecules. And that's where docking comes into play. For example, we have an enzyme and a ligand. And the major thing that we wanted to know is how do they interact and they position themselves. Say, for example, this ligand over here, I have oriented in this way, but once you apply a molecular docking procedure, the molecule actually tries to find the appropriate site over the enzyme and the position. It takes into account of the place, as he said, the active site or the allosteric sites, different sites, and also the interactions it could make with the receptor. So that is where molecular docking is. So in simple, we could say it as like we are trying to find the best match between two molecules. So why is it molecular docking important, or why do we really need it? As we all know, like in drug discovery process, to have a new drug, recent studies have shown that approximately it takes longer than 10 years. Okay, it's more than a decade. So what happens is, and people invest so much for at least one simple drug to come into the market, we spend approximately 2.5 billion US dollars, which is a big investment. But how do you minimize this? I know it's not going to be like so much of money that we could reduce it, but with the latest technologies, you have many ways to decrease the amount that we spend on the initial search. That is where the drug discovery people came into a procedure called virtual screening or high throughput. Your high throughput screening that we do experimentally is different, and this is different. So this is virtual screening, which is like we're going to do or screen the entire database of molecules that we have. We have number of databases where we have whatever molecules being synthesized and it's been deposited. One such example is CST or PubChem, or you have many other databases. In your handouts, I have actually given a link where you can actually look for all the databases and all the available softwares and everything. So for now, I'll keep continuing with this. So what happens is when we have millions of structures, we could actually screen each molecule and bring down from thousands into 1,000 molecules. So from millions, you come down to 1,000, and then further evaluation would lead to go down to select, like say, I have 10 molecules at the end. So this 10 molecules, I can actually go in the experimental level, where I can go for the regular experiments. So this is
more of time constraint, like you are reducing your time, and it is cost effective and it is more efficient too. So that's the reason we wanted to do molecular docking, and we are here to learn the basics of molecular docking. So in the simple way in which molecular docking is carried out is, first is we should have an initial structure, which is the coordinates, XYZ coordinates, where your molecule is in space. So once you have the structure of the molecule, then we go for the structure preparation step, and we take you to the screening step, and then the evaluation. So first, going for the structure determination. So once you have the structure determined, if you have your protein and your ligand as like X-ray or NMR, it's fine. What happens when we don't have the structure of the molecule? Then we go for homology modeling. So we use all available techniques to identify initially a structure, a template model. So for both a receptor and a ligand. Once you have your receptor and the ligand, we go for the preparation step, where we have to prepare our protein molecule computationally to go for docking, because the biological molecule, the coordinates, whatever you have, computer has to understand how it has to treat the receptor. So we go for the receptor preparation as well as the ligand preparation. And once you have all your molecules ready, we then go on and set up the parameters. Parameters is like you're going to give approximately, if you know exactly where the molecule could bind, we can define it, okay? Whereas, what if we don't know where this particular ligand could bind, then you can give approximate parameters. So for it to search and find the exact space. So here, once the parameters are set, we go for the molecular docking, and once molecular docking is completed, you get number of poses for one single ligand. So you have to evaluate which is the best binding pose, which is the best molecular pose, which is interacting with that particular enzyme. So we are going to see all this in our test case. So then you will be able to understand much clearer. So before going on to our exercise, I wanted to make sure, so in between the computational and prediction step, there are different things that we need to remember. One is the, when you set up your docking parameters and give molecular docking, there are two things which happens. First is the conformational search, which means for every molecule, there are a number of rotatable bonds. So it's going to have various conformational search methods. What we are doing here is simply we could do three different ways. One is rigid body docking, where you keep your receptor as rigid and your ligand as rigid, and you just try to put and take it out. So you're not going to really move or do any orientational shifts or anything to your molecule. Okay? The next is flexible ligand docking, where you keep your receptor to be rigid, whereas the ligand molecule, say for example, I have it like this, I try to orient it and try to translate it and try to put them in the right orientation and the pose it could interact with the receptor. So this is the flexible ligand docking. And the next step is flexible ligand and flexible receptor. This is efficient, but it is time consuming and it is cost effective. So most, when you go for like a lot of automated screening and when you have to screen like a huge database, initial steps people don't use this flexible ligand docking. They try to use a flexible ligand rigid receptor docking, because that is like pretty easy and it's not time consuming. And then, as I said, once you have all the poses generated, you don't know how you have to select the best pose out of your complete run. Therefore, there are people who have come up with algorithms to score them, just like how we get our grades and we score ourselves. The same way, we score our docked poses also. And we dock them, like we score them based on force field. Force field are nothing but the parameters that's been calculated for bonds, atoms, angles,
and the torsion angles. So all these parameters which are being calculated, and it's been already developed as a force field. And then the empirical based one and the knowledge based one. So these are all based on the informations collected. And then the consensus scoring is you combine two different scoring functions. So it's like mix two different functions and calculate the rank. So these are the ways we evaluate. So now we know, like, okay, we are going to do a molecular docking and all that. So how simple or how complex is a molecular docking step? There are major challenges in molecular docking. First simple thing is, say for here you could see this molecule. Let's say this is a drug-like molecule, and we have it has number of rotatable bonds, which means they could move around in space. For example, I'm taking this θ1, saying this as one rotatable bond. This molecule has one rotatable bond. So initially what docking programs would do is, most of them would try to move them in intervals of 10 degrees increment. So every 10 degrees there would be a rotation that could be given to a rotatable bond. So what happens, for one single rotatable bond, we are going to have 36. So you have 36 different calculations. And now let's take θ1 and θ2. Yeah. Do you need to mark the rotatable bonds, or the software will recommend? Software. Yeah. In case if we have something specific that we want to mention, then say for example, I don't want a bond to move, I want that to be static, we could even mention that. Yeah. So for example, we have θ2, the second angle. So now think of, you have 36 plus again a 36. So the number is going to keep on increasing for a molecule. For example, if it has 12 rotatable bonds, it's going to be 36 to the power of 12. Calculations that's going to go on at the background. You are not going to sit and do that. In addition to all these calculations, we also have 6 different parameters in docking, which are the rotation and translation parameters. So now you know you have a molecule, and these are by themselves rotatable based on the rotatable bonds. But you have your receptor. There needs to be a parameter which needs to take it to that place. So which is translate and then rotate in such a way it could fit into the active site. So these are 6 parameters. So 3 for rotation and 3 for translation. So whatever, say for example, if my ligand has 5 rotatable bonds, so 5 plus 6 is going to be 11. 11 and the increment of 36. So it's going to be a huge calculation. So this is a major challenge in molecular docking. So what happens is, when you go for like pretty larger molecules, there are different other ways that we handle those molecules. So now, before we go on to our case study, I just want to make sure whether everyone has the software installed, both Chimera and AutoDock Vina in their laptops. So do you all have? Everyone has? Okay. Just to make sure like we have things on the same path, I would request you to just create a directory called molecular docking in your desktop, because that would be the current directory that we will work on. And once you have the directory, I want you to locate the AutoDock Vina file in your system and copy those 3 executable files in that to this particular directory. So if you are using Mac, wherever the path that you have installed AutoDock Vina, it will be inside the bin directory. And if you are installed in any Windows machine, then you have to go to the C drive, and where you have program file program files x86, the Scripps Research Institute, inside that Vina would be there, and there will be 3 files. Just copy those 3 files to the molecular docking directory that we have in the desktop.
So it's done with everybody. So all of you have it in the current directory, your Vina executables. You're done? Good. Okay. So now the other websites that we will be using today would be the PubChem, where we will get our small molecule or the ligand molecules, and the protein data bank, where we are going to get the coordinates of our receptor molecule. So this would be the simple flowchart of what we are going to do in our open source tool. So we are going to use Chimera and build our ligand molecule, and we are going to get our PDB file, and we are going to process both our ligand and our protein, so which we say like receptor or protein molecule. So once they are prepared, we set up an AutoDock Vina run, and we are going to analyze the results. Okay? So now let's get on the exercise. Let's start. So now once you have all your files on the desktop, let's start. Just yeah. So go to your Windows and start Chimera, or in Mac, wherever you have your Chimera installed. Just open that up. And if you are opening Chimera for the first time, you would not see this panel over here. Okay? Because this just keeps in memory like whatever you have worked on earlier, just to make sure in case you lost something, you can just click on this and you will get it. Okay? And then in your browser, I want you to open the PubChem database. So you can even find the links in case you can't do it in Google. You can just see the handout where you will have the links for PubChem, and just type in. Okay, let me just put it here so it looks something like this. So first we are going to take 5-nitroquinoline and just click into this, and there we are. Once you go in here, what we are going to do is we are just going to copy this canonical smiles. So the smiles is nothing but an one-dimensional representation of organic molecules. The simple way of representing for the computer to understand. So we are copying that, and we come back to our Chimera window. And if anybody couldn't follow, just raise your hand so I can stop for a while so I don't rush. So, excuse me, I'm trying to follow the handout as well, but the molecule that you're listing. Oh, that's different. That's the exercise for you to do later. So what was the molecule that we need to find? 5-nitroquinoline. So everyone has this, like, all of you have this molecule? Okay, so we have the smile string copied, and let's go to the Chimera window and go up for the icon tools. So go getting in there, we have tools, structure editing, and go for build structure. So here you could see actually this window shows like various options. You can even start building from atom by atom. You can even start with a fragment, and you can start with a smile string or a PubChem ID. So you can do like any ways, like however you want your molecule to be built. In case you have your molecule already from some other database, you have their coordinates, you can just download and save them, and you can call them. Just open them in. For now, I'm just going to show you this method because I want you to know how you could build. So just paste the string that we copied from the PubChem database. So just paste that, and I'm going to rename it to 5NQ just for 5-nitroquinoline, and just click on apply. And did you see what happened on your screen? Hope all of you had the molecule built. Everyone has the molecule ready?
Okay, so now let's close this window. The smaller window that we use for building a molecule. So now once you have this molecule, go back again to Tools, Structure Editing, and minimize the structure. So minimizing, we are trying to optimize the structure. So here I'm not going to change most part, I'm just going to leave it as it is and just click minimize. So the various icons, you can even learn what all these means. I'm not going to explain all of that now because it's going to be time consuming. But I have attached the tutorial part in the handouts, so you should be able to find in the data from the websites. So just click on minimize, and once you click on that, you will find add hydrogens. It's going to ask me to first add the hydrogen molecules if something is missing in. Okay. And then it is asking me to choose the force field, the charges. So when I give the charges, it's going to choose the force field. Being this is a small molecule, I am applying Gastiger charges and then click on. And now the system is calculating the net charge for this particular molecule and it is 0. So just click on OK. And now over here you can see it's saying like finish 10 of 10 conjugate gradient minimization. So it's done with the minimization. I'm just giving the least number of minimization steps, but usually in our daily work when we give more than 100,000 sometimes. It depends on the molecule and the project that you're working on, for example, the complexity of the system. So now we have this molecule completely minimized. So we are going to save this molecule. So save mol2. Just go to the directory. I told you like we are creating a working directory called molecular docking in the desktop. So just go in there and you can save this molecule as 5NQ. So just we are done saving this. Everyone is done with this? No? How do you save the molecule again? How do you save the 5NQ, 5-nitroquinone. File saved. Oh, file save as. So just file, save mol2, and this will be the path. See users, instructor, so this is for this system. So inside the molecular docking thing, I'm just saving it as 5NQ and click on save. I already have the molecule saved. So if I click on that, it's going to ask me, do you want to replace or overwrite? I'm just saying yes for now. So it's, everyone has got this? Okay. So now, I got an error message saying you must provide a file name that contains either the name or number which will be changed to. So we have Balaji over here. He can help you around in case if you want anything for now. So once we start with the test case, I will be also there to figure out how things are going to be. So like since Balaji is taking care of things, we'll move on to the next step. So now you have your ligand molecule ready. We're going to go and get our protein that we need. So as I said, the next database that we are using is our protein databand. Just go into that and type in 3ERD and you're going to get this. So this is nothing but a human estrogen receptor. And whatever test cases I have chosen is just for the exercise over here, and this has no relevance to me. I'm not working in any of these. So download this file, and so when you click on download files, there used to be like several options. We are going to just click on PDB format and save the file. Okay. I don't know which path it takes in this system, so I'm just opening that. So here it is. I'm just going to copy that and put it in the folder that we created.
the molecular docking. So I have copied it to the directory that we created. So now we have a protein molecule in our current directory. So just go to the Chimera window again and click on open. So this will now directly take you to the current path that you have set, because you already saved a molecule. So it's again going to take you to the default path for now, the working path that we are. So just click on 3erd.pdb and open. So now you could see the protein molecule loaded in. So we have a big system, and this protein molecule, so this protein molecule, if you see, this is a dimer. It has two chains. What we are going to do is, these are identical dimers. So we are not going to use both the chains for our studies right now, because they are similar. So we are just going to use only one chain. For that, let's go to select chain and select chain A. Okay? We need only chain A, so we don't want the rest of anything in here. So just go back again to select, and there is an option called Invert All Models. Just click on that, and you will select the rest of the molecules in the window. And go to Action, Atoms or Bonds, Delete. So all that, the rest of other stuff is gone. We don't have anything which will disturb us, or which is not going to take more computational time. So you want us to delete the ligand as well? Yeah, we can load it, because I didn't want to mess it. So now in this protein molecule, you could see all the amino acid residues are shown like in cartoon forms, whereas there is some sticks which are like few amino acids where there are interacting residues, and there is a ligand. For us to know which is a ligand, you don't know what is the ligand molecule in this particular protein. So what we are going to do is go to select, and now go to residue. So residue selection has all the different ways that we could select. One is through amino acid category, the various categories available, and non-standard residues. So ligands are going to be in the non-standard residues. So for this particular molecule, DES is the ligand. So if you see here, so I'm going to just change the color of the molecule so for us to know which is the ligand and which is the protein. So just go to Atom Actions, Color, and click at the bottom, like the third one from bottom, third or fourth one I could say, by element. So now if you see, the molecule that you selected is in gray, so which is your ligand molecule. Actually, we are not going to work with this particular ligand molecule, because we have built our ligand molecule. We are going to dock that in. But for now, to differentiate, I have colored it. So now you have your protein chain. We have to do the next step is the protein preparation. So go for Tools, Surface or Binding Analysis, and click on Dock Prep. And here it's going to ask the same whatever we saw earlier when we built our ligand. It's going to ask for adding hydrogen. So here, if you see this panel, everything is going on. At the bottom, you can, if you keep an eye on this, you will know what progress is going on in every step. So we are adding hydrogens, and the default selection, whatever we had earlier, we are just leaving it in for the force charges. And now this is calculating the net charge for the system. And so once you have all this, it's going to ask whether you need to save the file. So first let's get and save it as 3ERD. Sorry, you're going a little too fast. If someone, couldn't get to the, what you said, tools and whatever, then that person lost. Like, you can always stop me. Yes, I'm not sure if it's just me or. It's like every
how about others? Are you able to follow it, or am I too fast? That's a bit too fast. It's too fast for you? Yes. Okay. Because some things, like, you'll say it, but then trying to see it on the screen because it's clear, I'm not sure which one to click sometimes. Oh, you're not able to see that? Yeah. The glare Okay. is bad. Okay. You want me to do the complete protein part again? It was just the last part that was a bit where I wasn't quite sure what happened. Okay. So, Balaji can help you if it's just one or two of you, because I don't want to make others also wait. But we can spend time later on. We could sit and we can work on if you have time. Can you just review the last part again? Yeah. The last part that you went through. Yeah. So first, like, I'm just closing this. I'm not saving the molecule. Just go for the tools, and you have your surface of binding analysis, and then you have your dock prep. Just click on that. So once you click on that, you will have a window asking which molecule you want to do dock prep. For now, we have only one molecule loaded, so you just have 3erd.pdb and just say OK. And if the right mol2 file, the last option is not clicked, you can just make that mark on. Sorry, for some reason, for me, I have two molecules open. I have that size that we did at the beginning, and I have. Oh, you have two molecules. That's good. Okay, so just, if I'm not seeing the same that I have here, it's a problem, I guess. Oh, no. Yeah. So you have two molecules. That is good. No problem. So just we are selecting this molecule, and you're going to, yeah. So this window actually allows you to work with multiple molecules. Okay, so but I just don't understand why, because we started at that, what we started at the beginning, you don't have that. Now I do have it, so I don't know. Oh, we built that molecule actually when we deleted one chain. Okay, that's okay. It's okay. It's just yeah. So now once you have this, just click on OK. And the next thing is it's going to ask me whether you want the hydrogens to be added to your molecule, and say yes, which is you're just leaving everything at the default and you're clicking just OK. And then assign charges, just click OK. And once you put in your hydrogens, charges and everything, Chimera tends to calculate the net charge of the system. So here there is a chlorine which is with -1 charge, and DS which is a ligand of this particular protein, and it has no charge, and histidine we didn't assign any charges for the protein. So just click OK. And once I click OK, it automatically redirects you to save your file. So now just type in 3ERD and you can save this. Just click save. So for now I have this molecule already, so it's going to ask me again. Just I'm clicking yes. Okay, so we have this. The next thing is we want to prepare our or set our docking parameters for our molecular docking to start. So just go in again to the tools, surface of binding analysis, and AutoDock Vina. Okay. So now, everyone got this window? Like all of you all? Are you able to follow? Like, sorry, I don't know her name. I'll be fine. Doesn't matter. I'm fine. Okay. So are you able to? You got this window? So let's move to the next one. Just go for the output file location, just browse, and now you'll see the path, the default path that we had. Just type in a name that you could remember for your docking recess. So just I'm typing 3ERD, which is a receptor, and 5NQ, the ligand, and I'm just going underscore 5NQ ligand, and I'm just saying set output location. Just click on that.
And now, here you could see the receptor, which is 3ERD.PDB. Okay, but the ligand, is it the same ligand that we want to dock? No, right? So we need our molecule that we built already. So just go to File. Sir, I think you already have the molecule in your window. You don't have to do that. So just go to File, Open, File nq.mol2. That's what we saved. So just open that. And did you see the new molecule in here? If you click on, like, keep the pointer on the molecule, you'll be able to see what the molecule is, 5NQ. If we see this molecule, it's in a different space. It's not interacting with anything in this protein molecule. So now we have to make the parameters ready so that we can start the docking step. The next is going for the just click on this one, the receptor search volume options, resize search volume. Just click this. You need to change the ligand. Yeah. Oh, sorry. Now since like we loaded our ligand molecule, just change it. Here you will see the SMILE C1. It's the 5NQ molecule. So just click on that. And here, the center. For now, I have already tried this, so I'm just giving the value. Because we don't have enough time, I want to give you a little time to work on the exercise. So for now, I'm just typing in the value. If we don't know, we can actually move the marker that appears here. Once I set this, you will be able to see that marker. So the center is 5 minus 1.5 and minus 3.5 I'm giving. And I'm giving a box size of 10 cross 10 cross 10, which is the angstroms. So now, if you click on this dark part, you can see a green box. So the box actually says where my docking step is going to take place, where my docking algorithm is going to search through. So if you see here, just you're going to make sure it's in this particular path. Since like, if you see here, I moved it. So what would you expect the position to happen? There should be some change, right? So if you see here, earlier I gave the center to be 5 minus 1.5 and minus 3.5. But now, since I moved the box, let me just put it both the sides so you could actually see like what happens. So if I try to move the box, you can actually see the center keep moving. But the box size is not moving because I'm not keeping my arrow in the box. Whereas if you keep the arrow in the box and you try to move in, yeah, so in one of the phase you are trying to keep it, and so now can you see the box size is moving? We are changing it. So it depends on the system that we are going to work. Okay, for this particular system, I'm just keeping them as the values that I said, 5 minus 1.5 minus 3.5, 10. Okay, so this is just to, oops, I don't know, did I close it? No. Yeah. So this box is to show where the active or the binding site could be for this particular protein. So since we already have a ligand bound there, we kept that molecule to see whether this box actually fits in. So can you see now the gray part? Actually it is inside the box that we generated, just to make sure. So now we have set our box, which is the center, and the size of the box has been set. Go back to action, select, because we don't want the native or the ligand which was already in the crystal structure. So we are going to delete that. So first go to select and go here to the label where we have residue, and this is a non-standard residue, right? So DES is the ligand label. So just click on it. Could be different for different proteins. So it's not going to be the same 3-letter code for the ligand molecule because every ligand is going to have different 3-letter codes.
So just click on this DES. So now if you see, this is selected. So once the molecule is selected, you will actually, sorry. Oops. Yeah. So once the molecule is selected, you can actually see there is a green circle kind of a mark kind of thing, which shows like that particular part is selected. And then go to action, atoms or bonds, and delete. So you have them deleted, and I'm just making sure I don't want to have some other setting as like, so just keeping that constant. And now you have the box set. The next is the receptor options. Just click on the small window again, the one that we are working on, where we have the center and size, receptor options. So everything is set, everything to be true. I think if you're opening for the first time, there will be the last one, ignore all non-standard residues, will be false. You can just click that to be true, because you're not going to use a chlorine ion for our docking. And in case if you want to have a water molecule and all, when we do like higher docking steps, you can make this false. So that time the water will be included. And then the ligand options, just leave it default. Advanced, here the maximum number of binding modes we are going to write now is 10, and the exhaustiveness of search is 8, which is a maximum. You can actually vary it from 1, 2, 3. So it's going to be the exhaustiveness of the search, like how long the search is going to be or how many iterations it's going to take in. And the minimum energy difference. So when it's going to be more difference than this, then the confirmation or the post would not be written. So we have set it to be default. We are not changing anything. And the most important thing is, so just click on all this again, so the window minimizes, so you are able to see the other, the last part. So just click on executable location. By default, it will say like open web service. You can actually use web service, but for now, web service is going to be common and a lot of people are going to use it, and if you submit something, it can go in queue. So for now, what we are doing is, we have AutoDock Vina installed in our systems, so let's give the local path. Okay, just click on local and browse and go to the path where you have your AutoDock Vina files. So for people who have taken the loan laptops, you could see there is a Vina folder in your desktop. You have to just copy those executables to your current directory. And the rest of the people, I'm sure like you have already got them in the molecular docking directory. So just click on this vina.exe and click open. So now we are all set. Now we have, just before clicking on the docking run, we have to just make sure everything is right. We have the output location set, we have a receptor, we have the ligand set, and the output is set, and also the search volume, everything is set. So just click on OK. And now you can see the job is running. Your molecular docking is going on, and once the run is done, you'll see a window popping up saying view dock, which is, oh, see here, I have already done the docking and I have all the poses for you to analyze. So so if you see here, I'm just trying to zooming in. So whenever we had the ligand for this particular receptor, so our molecule has come into that space. And here in this window, you could actually see, you can align them based on the score. Just click on the icon score. So you can have them aligned based on the score. Okay. Now you can evaluate. So how do we evaluate each of these? One is through the scores and the RMSD, and the next is we will check for the hydrogen bond interactions, because the hydrogen bond interactions actually makes a stable complex. Before we do that, I want to show you, just click on movie and play. So now you'll be able to see like how different orientations a simple molecule takes, because this molecule actually has only one rotatable bond.
How could you know that? If you see here, the one that I have selected, okay, for now I'm just stopping the movie. If you see here, 1A, which means it's just only one active rotatable bond. Okay, so for this molecule, we are going to calculate the hydrogen bond interactions. Let's click on H bonds and click on add count to entire receptor. So, and we're going to leave them at the default values and click OK, and keep an eye on this toolbar again just to see like what happens to this molecule. Is there any interaction for this molecule? Even though the energy seems to look good, let's see what happens with the hydrogen bonds. So what it says, it has 0 hydrogen bonds. So now we are able to see that this molecule, even though it fits into the pocket of this particular protein, what happens is it doesn't have any stronger interactions. It doesn't make any stronger interactions with it. So this is not the perfect ligand or the compound that needs to be screened for this particular receptor. So once you have a huge database, you should be able to differentiate. So that's the reason I took a molecule which is actually not working for this receptor, just to show what would be the case. But now in your test case, I have given you the molecule. It's a different protein and a different ligand, and when you click on and work on that, you will be able to see the interactions. Okay, so once there is an interaction, you will be able to see, once you click on that particular window where the hydrogen bonds are, once you say OK, you will be able to see, like, for example, if this oxygen and some nitrogen is interacting, there will be a line to show that there is an interaction. And based on the interactions, you can select the poses. You can keep whatever poses you need, and you can delete the rest of it, whichever is not the worth saving. You don't want to waste your space in the system too, because you want the relevant poses. You don't want everything in dump as. So we are just going to save. You can save that, okay, at the later part. So this is all. And now, before I finish and before we start doing the exercise part, I just want to make sure, like, we learned, at least I hope, like, I try to convince you that there is something important in molecular docking and how you could do a molecular docking. And if you need any other tutorials, or if you want to go chat with any online forums, you need any help, so all these links would be of more helpful. You can just click and check on this. And I would like to thank my PI, Umesh R. Desai, because he was the one reason I am here as a postdoc. And install like a Chimera and how to embed that with AutoDock Vina. So these two tools will go side by side. This will be embedded within the Chimera. And before to start with, after that, to start with, you need to create a folder. You may name it as molecular docking. And after that, you have seen that in the particular, we need to locate the 3 files present in the C partition. So go to the C partition, click C, and then you need to click program files x86, and after that there will be a folder that has been created automatically by installing these two tools. So the Script Institute, Research Institute, click that, and there will be another folder within this folder, and this will be named as Vina. And in this folder, you will find 3 files, .exe and .rtf files. So copy those files, paste them in the molecular docking folder on the desktop. So now you have a molecular docking folder on the desktop with these 3 files. After that, you need to click on the PubChem. You will have, this is an example for that. Search 5-NQ or 5-nitroquinoline,
and copy one-dimensional structure of the for the computer to understand, and that is the canonical smile. Canonical smile is actually one-dimensional structure for the computer to understand. So basically, we know we are well versed with the structures like these structures. What is this actually? And if that is OH, what is this class? Can you hear me, class? Yes, sir. Phenol? Yes, sir. Yes, sir. Yes, Phenol. exactly. We are well versed with this, but the computer will not understand this structure. For the computer to understand, it will I'm not writing this structure, but I'm writing like the computer to understand is like maybe like this structure. So this structure this is not like for this structure, but normally these are the chemical formulas and written in one line. And this formula is known as canonical smile, this canonical smiles. So they are canonical smiles. So this is the one-dimensional structure of for the computer to understand. So the computer will understand this structure and not these type of structures. So now we have to take canonical smiles, and for canonical smiles there is a link on PubChem. So go on PubChem, write this thing for an example, and it will have now the PubChem will give three-dimensional structure, three-dimensional structure, two-dimensional structure, three-dimensional structure, two-dimensional structures, and the canonical smiles, canonical smiles. So it will give three types of structure. So now we need to take this one, canonical smiles. So take canonical smiles from there. At later on, at some stages, we can need also these structures as well. But for now, we will take canonical smiles, smile string. And after taking canonical smile, now download that, and now you need to open the canonical smile in Chimera. So you need to open the software, the Chimera, click on tools. Now open that and then click on tool, structure editing, build structure, smile string, click that and paste string and name it, apply and close. So you have to rename it like with your own convenience, like if you know the like the chemical, and you rename it and save that. Then click tools, structure editing, minimize structure to optimize, then minimize, add hydrogen, and 5NQ is a small molecule. So choose charges, gas trigger, and then click OK. So here we need to know one thing you need to know, and that is what? Add hydrogen. Add hydrogen. So previously we have talked about that X-ray crystallography, like when we do X-ray crystallography, what we do, actually we determine the structure, X-ray crystallography structure, and in that in those structure there are no hydrogen bonds. So to cover those, we need to add hydrogen bonds to our structures. So we need to add, so after minimization, we need to add hydrogen bonds. And this structure will be as small as this ligand. This is a small structure, so choose structure, to choose charges, we need to add charges as well, but choose gas trigger charges. These are for small molecules. So to add charges, add hydrogen bonds, hydrogen atoms, because the hydrogen atoms are not present in the structures, in these crystallographic structures. So we need to add hydrogen bonds as hydrogens as well, hydrogen atoms. So then after that, click File, Mol2, name it, and name 5NQ, and then save. And then
for the protein, this was for the ligand. Now for the protein, to take protein, there is an example, and that is 3ERD. This is the accession of a protein. And now for that, you need to go to the PDB site, website, RCSB PDB website, and click that and find 3ERD there. So you will see the structure there, and and download that file in the PDB format. Download that in the PDB format. Save it in molecular docking folder. Now, after saving the protein in the PDB structure from our RCSB PDB web page, now open Chimera. Open 3ERD.pdb in Chimera. And then the structure is, you will see that this structure, like when you do it yourself, you will see that this structure is in dimeric form. This will be in the dimeric form. So you need to take, this will be A and this will be B. So A chain, B chain. So you need to because this is the copy of that, they are homodimers. So you need to delete the one. So how you will delete one? Now you will select chain A. Select chain A. So this chain will be selected. And if you select this chain, then click invert model. So by inverting the model, this will select this one, and this will be like free. Now click on actions, click then atoms, bonds, and click delete. So this will be deleted then, because we have inverted that. So now this will be the selection, and now click delete, so it will be deleted. Now you have only one of the chains. So this A chain is now with you, and there is no B chain now. So the residues, to see which is the ligand node, is select, click select, and check on the residues. The DES is actually, you will see there in this very specific case, DES will be the ligand. So action color by element, you can do, you can color by element now, and then name the structure, and then save it. So this is what you will have to do with the protein. Now you are done with the ligand. Also, you are done with the protein. After that, for protein preparation, now you need to prepare the protein as well. So click on the tool, surface binding analysis, click dock prep, okay, add hydrogen. Again, we need to add hydrogen because it's a crystallographic structure, and then save. And then after that, tool, surface binding analysis, AutoDock Vina, output. So this is what you can do it practically on your systems. And after that, the molecules will be visible in different space. Like now, this is important. When you open these two structures, so one is your protein, and the other is your ligand. So this will be in the different space. Now you need to interact both of these. So for that, so these will be in a different space. This will be located like here. This will be located like here. Now we need to interact them. Like we need to know either they are interacting or not. So what you will do, there is a need to make the parameters to do it dock. So to making this dock here in this protein, we need to have to put some parameters on that to restrict them. So change the ligand. So now there the ligand will be the smile, because the canonical smile is actually the ligand, and resize the search volume. So you need to have, like we actually, like if we know the active site of this protein, like we know that this is the active site of this protein.
So we need to select this, and this is, we need to grid this, means we need to select this. So we will grid this region of the protein. If we don't need, if we don't know the active site, we can grid the whole protein. So if we grid the whole protein, this molecule will interact, can interact at any site of this molecule. But if we grid this area, this molecule will grid here, will interact here. But if we grid like whole of this area, this will be present here. This will not interact with the protein. So we need to grid the specific location where we need to interact this. This is based on our information. If we know the active site, we will grid this area. But if we don't know, so we will blindly grid the whole protein. If we grid the whole protein, this ligand will bind wherever it can, and it has the affinity to bind with the region. So usually people do blind docking initially, and later on, after having some information about the pocket, specific pocket, so the grid is around that very specific pocket, so that the molecule could dock there. And after that resize, so this is actually the values where we need to grid, like you can give 5, 1.4 minus 1.5 minus 3.5, and this is the box size 10 10 10. So this will be the actually the grid box size actually. Okay, and now if needed, drag the green box. Okay, so you can drag it yourself as well, rather than giving the values. You can give the values to make the grid, or you can drag the green box. Yeah, like this will be the green. So this you can like resize the box accordingly as per your requirements. Am I clear or not? Who will explain like this slide? फरीन खुरम फरीन yes, sir. जी, जितनी समझ आई है प्लीज ये बता दें इस स्लाइड की। सर मुझे तो इसमें बस यही बात समझ आई है कि हमारे पास एक प्रोटीन है और साथ में लिगेंड है, तो सर उसको एक्टिव साइट में हमने इंट्रोड्यूस करवाना है, तो हम या तो वो साइट लेंगे जहाँ पे करवाना है और उसको मूव कर देंगे, और अगर हमें उस साइट का नहीं पता, हम पूरा प्रोटीन का मॉलिक्यूल होगा उसको लेंगे। Exactly. This is what I want to know actually. I want to listen from you. ठीक है, बिल्कुल ठीक है। Okay, and हाइड्रोजन बॉन्ड भी हमने ऐड करने हैं। हाइड्रोजन बॉन्ड क्यों ऐड करने हैं? सर उसके चार्जेस की वजह से, अगर चार्जेस ऐड करने हैं, चार्जेस ऐड करने और हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं। यस बिकॉज व्हाई? बिकॉज सर बता दिया। कलीमुल्लाह, कलीम सर जी, कलीम आप एक्सप्लेन कर दें। सर बस समझ नहीं आ रही सर, ये काम वो कंप्यूटर पे होगा तब समझ आएगा। नहीं तो कंप्यूटर पे किसने करना है? तो हमने करना सर ऐसे। हाँ, तो पिछली दफ़ा मैं जब ट्यूटोरियल दिखा रहा था उस वक्त ये कहा था कि आप लोगों ने अपने सिस्टम पे इसको रन करना है, खुद इसको देख के करना है। ठीक है, अब मैं तो ये नहीं कर सकता कि प्रैक्टिकली एक एक बंदे के पास आऊँ और आपको बताऊँ कि ये इस तरह करना है, इस तरह करना है, इस तरह करना है। मैं यही कर सकता हूँ कि या तो खुद आप प्रैक्टिकली खुद कर दूँ, या आपको वो वीडियो दिखा दूँ कि जिसमें पूरा प्रोसेस। वीडियो इस वजह से आसान है कि वो आप लाइक उसको देखें और एक उसको पास करें और आगे एक एक स्टेप करें। ठीक है, इससे पहले जो मॉड्यूलर प्रोटीन मॉडल तो जो डिटरमिन किया था, तो वो भी मुझे लगता है आप लोगों ने नहीं किया होगा। जब आप लोग नहीं करेंगे इसी तरह होगा कि इससे समझ नहीं आएगी कि हो क्या रहा है, जब तक आप लोग प्रैक्टिकली ना करें खुद। सो प्लीज इसको आप इसको करें, और ये चीज़ें फिर उस वक्त समझ आएंगी कि लाइक हम क्यों ये कर रहे हैं।
ठीक है, तो आप लोगों ने एक दफ़ा गो थ्रू किया होगा अपने सिस्टम पे, और फिर मैं बताऊंगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स, हम हाइड्रोजन एटम्स हम इस वजह से ऐड करते हैं कि एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, इस वजह से इस प्रोसेस के अंदर आप लोगों ने हाइड्रोजन एटम्स ऐड किए थे, फिर आपको समझ आएगी। आपने कैनोनिकल स्माइल क्यों लिया था, तो यहाँ पे मैं ये बताऊंगा कि कैनोनिकल स्माइल इस वजह से लेते हैं कि ये सिंगल लाइन फार्मूला होता है और the computer could understand that this। फिर आपको समझ आएगी कि कैनोनिकल स्माइल आप लोगों ने क्यों लिया था। लेकिन आप लोगों ने अगर कवर ही नहीं किया ही नहीं है, तो मैं क्या बताऊं कि ये क्या किया, इसमें क्यों कैनोनिकल स्माइल्स क्यों होते हैं, आपको पता ही ना हो कि इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं या यूज कहाँ पे होते हैं। आपको यूज का पता हो तो उसका क्यों हम कर रहे हैं, फिर आपको उसका पता चलना है। कैन यू अंडरस्टैंड? करीम आप खुद पे ना लें, मैं पूरी क्लास पे बता रहा हूँ एक्चुअली, ठीक है? सो प्लीज इसको करें, और एंड इसको ये ना समझें कि ये आपकी क्लास का काम है। दिस इज लाइक आपकी पूरी लाइक आप यू आर अ साइंटिस्ट नाउ, यू हैव, आप जिस फील्ड में भी रिसर्च कर रहे हैं, यू कैन अप्लाई दिस, ठीक है? और खासकर जो आजकल का दौर है, हमें इसमें सीखना चाहिए कि लाइक लैब्स बंद होती हैं, सारी चीज़ें बंद होती हैं, सो वी हैव द बायोइन्फॉर्मेटिक्स इज वायबल ऑप्शन। आप कंप्यूटर पे बैठ के रिसर्च कर सकते हैं, बट इफ़ यू हैव द आइडिया एंड इफ़ यू हैव द टूल्स दैट यू नो, लेकिन आपको अगर टूल्स का ही पता नहीं है, लाइक आप, मुझे गाड़ी चलाना नहीं आती, सो लाइक अगर गाड़ी मौजूद है भी, सारी इंफॉर्मेशन मौजूद है भी, इंटरनेट पे सारी चीज़ें मौजूद है भी, मुझे आता ही नहीं है चलाना, ठीक है? सो व्हाट, ठीक है? दिस इज अपॉर्चुनिटी विद यू। ये आपको रिसर्च में सुपरवाइजर्स बताते होते हैं, लाइक आपका सुपरवाइजर अगर आपको बायोइन्फॉर्मेटिक्स का नहीं है, सो दिस इज द टाइम कि आप सीखें। आप लाइक वेट लैब में रिसर्च करनी है या जहाँ भी रिसर्च करनी है, आप साइट में आपके पास टाइम है, वही चीज़ें लाइक आप किसी प्रोटीन पे काम कर रहे हैं, वही चीज़ उठाएं, आपको पता है कि वो प्रोटीन को एंजाइम है, उसका सबस्ट्रेट लें और उसको यहाँ पे डॉक कर लें, आपके पास इंफॉर्मेशन है, आपके पास लाइक आप टूल्स अवेलेबल है, एक दफ़ा गो थ्रू करें तो आपको समझ आएगी, ठीक है? वरना आप ब्लाइंड होंगे, आपका सुपरवाइजर आपको से पूछेगा कि लाइक व्हाट इज योर इनपुट, वो तो जो चीजें वो बता रहे हैं वो हैं, लाइक दिस कैन यू ऐड विद दैट, ठीक है? तो सो ट्राई टू बी सीरियस, ट्राई टू टू वर्क ऑन इट। जी फरीन प्लीज बताएं। सर हम इसलिए तो हाइड्रोजन ऐड नहीं करवाते कि हमने बाइंडिंग करवानी होती है उसकी। नहीं, हाइड्रोजन एटम्स हैं, हाइड्रोजन एटम्स। एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर जो आते हैं ना, लाइक हमारे पास जो स्ट्रक्चर मौजूद होते हैं पीडीबी पे, वो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी के थ्रू आते हैं। सो एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर्स में हाइड्रोजन एटम नहीं होते, उसमें सिर्फ कार्बन और ऑक्सीजन और इस तरह के एटम्स होते हैं। तो उस वजह से उस स्ट्रक्चर को फिल करने के लिए हमने हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं, बिकॉज द एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफिक स्ट्रक्चर डोंट हैव एनी हाइड्रोजन एटम्स, ठीक है? सो वो फिर क्या होता है कि हमने हाइड्रोजन एटम्स ऐड करने हैं, लाइक हमारे पास जो भी प्रोटीन्स होते हैं उसमें हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, लेकिन वो जब हम प्रोटीन स्ट्रक्चर एक्स-रे क्रिस्टलोग्राफी से डिटरमिन करते हैं तो उसमें हाइड्रोजन एटम्स नहीं होते, तो वहाँ पे फिर हम हाइड्रोजन एटम्स ऐड कर देते हैं उस स्ट्रक्चर में, ताकि हम फिर डॉकिंग करें तो हाइड्रोजन एटम्स तो मौजूद हों, क्योंकि हाइड्रोजन एटम्स का बहुत रोल होता है इंटरेक्शंस में, ठीक है? ओके चलें। Okay, to go further, so now there is a need to delete. Okay, अब हमने क्या किया, हमने ये किया कि सबसे पहले जो लिगेंड है उसको प्रिपेयर किया, उसके बाद क्या किया कि प्रोटीन हमने लिया, उसको प्रिपेयर किया, डॉकिंग साइट हमने डिटरमिन की, और उसके बाद हमने ये देखा कुछ कुछ केसेस में, लाइक इन दिस ट्यूटोरियल एज वेल, हमने इस ट्यूटोरियल में आप देखेंगे कि वो जो प्रोटीन है उसमें ऑलरेडी एक लिगेंड मौजूद है, ऑलरेडी एक लिगेंड मौजूद है, और हमने क्या करना है, मैं चाह रहा हूं कि हमारे पास लाइक ये एक लाइक प्रोटीन है और इसमें एक लिगेंड मौजूद है, ये स्ट्रक्चर हमने डाउनलोड किया था पीडीबी से, हमने इसमें फिर हाइड्रोजन बॉन्ड ऐड कर दिए थे और इसको प्रिपेयर किया था, जो इसमें आपको बताएंगे कि मिनिमाइजेशन कर दी थी। अब हम चाह रहे हैं कि एक और लिगेंड है, मैं ये चाह रहा हूँ कि ये वायरस का प्रोटीन है, उसमें ऑलरेडी एक लिगेंड मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि कोई ड्रग डिज़ाइन करूँ और वो देखूँ कि वो इस
यहाँ पे डॉक हो सकती है कि नहीं, वो लिगेंड यहाँ पे डॉक हो सकता है कि नहीं। तो मैं क्या करूँगा, मैं इस रीजन को ग्रिड कर दूंगा, इस रीजन को मैं इसको डायरेक्ट करूँगा कि ये यहाँ पे बाइंड करें, ठीक है। इस रीजन को ग्रिड कर लूँगा, फिर मैं क्या करूँगा कि आई नीड टू डिलीट दिस वन, इसको मैं डिलीट करूँगा, इस रीजन इस लिगेंड को, इसको मैं डिलीट कर दूँगा और ये यहाँ पे डॉक हो जाना है। तो उसके लिए क्या होगा कि देयर इज अ नीड टू डिलीट द ऑलरेडी प्रेजेंट लिगेंड इन द बॉक्स। यहाँ पे ऑलरेडी एक लिगेंड मौजूद है जो इस वाले स्पेसिफिक केस में है। हो सकता है कि लाइक आपके एग्जांपल में, लाइक आप अगर कोई करें अपना, लाइक आप जिस पे रिसर्च कर रहे हैं उसमें आप पीडीबी से डाउनलोड करें और वहाँ पे लिगेंड मौजूद ना हो, लेकिन अक्सर लिगेंड मौजूद होते हैं प्रोटीन को स्टेबलाइज करने के लिए, स्ट्रक्चर्स मौजूद होती हैं। सो अब यहाँ पे क्या होगा कि इसको डिलीट करें, डिलीट दिस एंड ऑटोडॉक रिसेप्टर ट्रू, ओके, और लिगेंड ऑप्शन, और यहाँ पे आपने इसको ये पैरामीटर्स ये डिफाइन करने हैं, फिर आपने इसके लोकेशन को देना है, लोकेशन को इसको लोकल करें एंड ओके करें। ये आपने प्रैक्टिकली करना है, दिस इज व्हाट यू विल डू प्रैक्टिकली। सो आफ्टर दैट फिर क्या होगा कि वंस यू डिड दैट, व्यू डॉक एक ऑप्शन है, उसमें व्यू डॉक करें ताकि आप ये देखें कि जो मॉलिक्यूल है वो डॉक हुआ, लाइक विद आपका जो मॉलिक्यूल है वो यहाँ पे डॉक हो गया है कि नहीं। सो उसके लिए आपने देखना है, उसको व्यू डॉक आपने क्लिक करना है। व्यू डॉक जब आप क्लिक करें, एलाइन बेस कोर्स वो देगा, वो हाइड्रोजन बॉन्ड्स आपको देगा कि हाइड्रोजन बॉन्ड्स इंटरेक्शन कितनी है, और ऐड काउंट टू द एंटायर रिसेप्टर, इसको क्लिक करें और हाइड्रोजन बॉन्ड आपको बता देगा कि इसमें कितने हाइड्रोजन बॉन्ड हैं। अब एक बात यहाँ पे आपने याद रखनी है, हो सकता है यहाँ पे आपके पास 3-4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स आए इस तरह इसके साथ, ये लिगेंड जो है ये इसके इंटरेक्ट कर रहा हो 3-4 हाइड्रोजन बॉन्ड्स के साथ, हाइड्रोजन बॉन्ड के थ्रू इस लिगेंड के साथ अटैच हो। तो ज्यादा हाइड्रोजन बॉन्ड्स का मतलब है कि दिस लिगेंड इंटरेक्ट टाइटली विद द प्रोटीन, और इसकी एक बाइंडिंग एनर्जी भी आएगी और हाइड्रोजन बॉन्ड्स भी आएंगे। सो दिस हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स जो है ये इंपॉर्टेंट है टू डिटरमिन आइदर दिस लिगेंड कैन इंटरेक्ट विद द प्रोटीन और नॉट। सो आपने वो कहाँ पे देखना है, वो व्यू डॉक में देखना है, ठीक है। सो लेकिन अगर हाइड्रोजन बॉन्ड कोई नहीं आ रहा, लाइक आपके पास ये प्रोटीन है और इसमें आप लाइक इस लिगेंड को इंटरेक्ट किया था, ये बाइंडिंग पॉकेट में तो आ गया है क्योंकि हमने ग्रिड यही पॉकेट किया था, बाइंडिंग पॉकेट में तो आ गया हुआ है, लेकिन यहाँ पे कोई इंटरेक्शन नहीं है, कोई हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है। सो यू विल सी देयर इफ देयर इज नो हाइड्रोजन बॉन्ड, अगर कोई भी हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है और ये सेपरेटली पड़ा हुआ है यहाँ पे, so that will mean no hydrogen bond means even though it fits in the binding pocket but have no hydrogen interaction। तो हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है, तो इसका मतलब है कि ये दोनों जो है वो they are not better candidates to interact। तो इसमें इनमें इंटरेक्शन है ही नहीं, ये वैसे ही वहां पड़ा हुआ है। so they can not like this could not be used an inhibitor or a binding candidate with this protein। तो अगर हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं है तो इट मींस कि ये इंटरेक्ट नहीं कर रहे हैं। आपको बात समझ आ गई कि नहीं क्लास? यस सर। फाइका इज देयर? यस सर। जी आप थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें इसको, इस स्लाइड को। सर इसके अंदर हमने देखा है कि जिस तरह पहले हमने लिगेंड प्रिपेयर किया था और हमने प्रोटीन प्रिपेयर किया था, अब हमने सबसे पहले ये किया कि अगर उस प्रोटीन के अंदर पहले से कोई लिगेंड मौजूद था उसको निकाल दिया, और उसके बाद जो हमने अपना नया लिगेंड लगाया उसको हमने चेक इस तरह से किया कि उसको हमने देखा कि अगर तो उसकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो गई है उसके साथ, तो इसका मतलब है कि वो सिर्फ पॉकेट के अंदर फिट नहीं हुआ बल्कि उसके साथ हाइड्रोजन इंटरेक्शन भी हुआ है। लेकिन अगर तो वो फिट तो हो गया मगर उसका हाइड्रोजन इंटरेक्शन नहीं है, इसका मतलब है कि वहां पर उसने मतलब आया है लेकिन उसके साथ हाइड्रोजन इंटरेक्शन नहीं है। ठीक हो गया, ठीक है, ठीक है, दैट्स ग्रेट, ग्रेट, ओके। एंड दैट्स इट। सो दिस इज